चलें ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम everyone, how are all of you doing? कैसे हैं सारे के सारे? I see a lot of students, mashallah, new names. I haven't seen names in my classes, but I know a few of these from my old sessions. And nice, nice, nice. कैसी जा रही है पढ़ाई, कैसी जा रही है बताएं? I'm good, doing amazing actually. आज तो बड़े मजे का दिन है, बड़ा मजे का मौसम चल रहा है इस्लामाबाद में. So I study business, not physics. That's why it's okay. Doesn't matter. This is a general session. अगर आप उस सेंस में कह रहे हैं तो यहाँ मैं आपको सब बताऊंगा पढ़ना कैसे है, ठीक है. बाकी जो आपने पढ़ना है वो आप लोग खुद देख लेंगे, आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. व्हाट आई एम जस्ट डूइंग, I've done physics last year, following cubic rule. Nice, nice, but still मुश्किल तो होती है kiddos. It always, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ना टिप्स देते हैं, ठीक है. I'm just waiting, students आ रहे हैं साथ साथ. अच्छा, so guys, a little introduction. I am the MD Managing Director of Conceptuals. हमारी ये जो शहजादा है माज मेरा स्टूडेंट रह चुका है, 3 साल में मेरा स्टूडेंट भी था, माशाल्लाह डिस्टिंक्शन होल्डर भी है, एंड नाउ इज अ टीचर एट Conceptuals as well. एंड देखिए गाइस, आई स्कोर 12 स्टार्स ओ लेवल्स में, जैसे माज ने कहा. एंड मैं आपको सिर्फ 2-3 टिप्स दूंगा. आप लोग शायद देख भी रहे हो, मैं आजकल यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता होता हूँ, बट इफ यू फॉलो दोस टिप्स ना, यू विल गो अ वेरी लॉन्ग वे. एंड व्हाट्स द वेरी फर्स्ट टिप? That is, I want you guys to note this down. ये जरा साथ साथ लिखें, आप लोगों को फायदा होगा. And the very first step is clarity. Now, what do I mean by clarity? Guys, आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? You wake up every day and then you decide आपने पढ़ना क्या. करते हैं ना कि यार कल मतलब संडे का दिन है, संडे के दिन उठे 12 बजे उठे, 2 बजे तक सोचें कि पढ़ना क्या है. You guys are, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि आप लोगों ने करना क्या है. द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, इवन इन प्रोफेशनल लाइफ आप जाके ये करते हैं, आप सबसे पहले पता है क्या करते हैं? आप एक अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं ना. व्हेन आई से टाइम टेबल, आई डोंट नीड वो बचपन में हम बनाते ना 4:30 बजे से 5 बजे तक नमाज पढ़ेंगे, 5 से 5:30 खाना खाएंगे, उसके बाद कार्टून देखेंगे, वो वाला नहीं. You just need to know what you have to do the next day. If you do not know what you're doing the next day, you waste half of your day. I used to do that unless I started doing this. तो क्लैरिटी जो होती है ना गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के सक्सेस के लिए. यू नीड टू बी क्लियर कि आपने अगले दिन करना क्या है. तो द वेरी लास्ट थिंग, मेरी आदत थी ना अपने ए लेवल्स में स्पेशली, आई यूज्ड टू डू दिस बिफोर स्लीपिंग. द वेरी लास्ट थिंग आई यूज्ड टू डू इज, मेरे पास अभी भी ये नोटबुक हमेशा एक पड़ी होती है, ठीक है, एंड अ पेन. ये देखिए पेन खुला हुआ भी है मेरे पास, हमेशा पड़ा होता है. आई राइट व्हाट आई हैव टू डू द नेक्स्ट डे. Once I know what I have to do the next day, when I wake the next day ना, तो I do not have to spend the entire day thinking कि यार मैंने करना क्या है. सबसे बड़ा मसला ही तो ये होता है आप लोगों का. आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने अगले दिन करना क्या है. That is why you waste a lot of time. तो देखें, ग्रेड लेने के लिए ना, देखें पढ़ाई सब कर लेते हैं, ये मेरी बात याद रखें. ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकता. द थिंग इज हाउ यू स्टडी, हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम. क्योंकि देखें टाइम एट दिस पॉइंट ना, at this point if I mean, time is the biggest currency that you have. You can go and buy 10,000 courses इस point पे, but कुछ नहीं होगा. Why? क्योंकि time नहीं है. So at this point your biggest currency is what? It's time. तो आप लोगों ने time बचाना है. ये मुझे बताएं, बात सबको क्लियर है? I need a yes from everyone. Remember, time is your biggest currency. इस वक्त सबसे बड़ा asset है आपका, ठीक है. ये मतलब कीमती है, इस वक्त सोने से कीमती है टाइम. टाइम नहीं जाया करना, बाकी जो करते हैं करें, ठीक है. मैं डिसिप्लिन पे भी आता हूँ, मैं एनर्जी पे भी आता हूँ, मैं सब बातों पे आता हूँ, ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट. बट द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, ये आप लोग लिखें क्लैरिटी. यू नीड टू नो व्हाट. फिर द नेक्स्ट स्टेप, यू नीड टू नो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता. जब इस टाइम पे रह जाते हैं ना, नाउ यू देयर इज ऑलमोस्ट 20-25 मोर डेज जो आप लोग टॉपिकल करेंगे. 30 डेज एट मैक्सिमम आप टॉपिकल कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में ईयरली स्टार्ट करना होता है. सो यू नीड टू नो कि व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डू नॉट नो. अब आप लोगों में पता है बच्चे क्या करते हैं, एंड ये मास भी इस बात को बताएगा, चूंकि ये यूनिवर्सिटी में भी आके बच्चे करते हैं, सो ऑन आगे जाके भी बच्चे करता क्या, जो उनको चीज आती है वो बार बार वही कर रहे होते हैं. दे आर सॉलिडिफाइंग अ कॉन्सेप्ट व्हिच दे ऑलरेडी नो. आपको पता है इसको क्या कहते हैं? दिस इज प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन. आप लोग कुछ सीख तो नहीं रहे, आप लोग इंप्रूव नहीं कर रहे. यू जस्ट डूइंग समथिंग दैट यू नो अगेन एंड अगेन एंड यू आर थिंकिंग यू आर बीइंग प्रोडक्टिव, whereas you're just being dumb, to be honest. You're just wasting your time. आप अपना टाइम ही जाया कर रहे हैं. तो ये जो आपको रखते हैं ना कि आप प्रोडक्टिव हैं while doing something again and again and again, that is wrong. You need to focus on the things that you do not know. इसके लिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ ट्रैफिक लाइट सिस्टम यूज करें. ट्रैफिक लाइट सिस्टम का सबको पता है क्या होता है? रेड ग्रीन येलो वाला. सुना हुआ किसी ने या नहीं? नहीं सुना हुआ? वेरी सिंपल. सिलेबस आज उठाएं, सिलेबस उठाएं, और सिलेबस में जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते उसको रेड करें, जो आते हैं उसको येलो करें, जो आते हैं जो नहीं आते हैं उनको रेड करें, जो थोड़े बहुत आते हैं उनको येलो करें, जो बिल्कुल A1 आते हैं उनको
ग्रीन करने, ठीक है। अब आपने अपने एग्जाम तक ग्रीन वालों को टच नहीं करना, आपने येलो वालों को भी टच नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी दोस रेड वंस एंड यू ब्रिंग दोस देम टू दोस येलो वाला पार्ट। आपने वो रेड वाले इतने कम से कम करने कि आप वो येलो पे ले आए। याद रखें, ओ लेवल ए लेवल्स में आपका सारा कोर्स कहीं से भी मतलब पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई टीचर कहता है ना कि यार ये चीज ना करो, ये ना करो, तो नो टीचर एक्चुअली नोज कि क्या होगा, ठीक है। एंड नोबडी कैन रियली गेस कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। So you need to make sure that you know at least something of everything. थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए आपको, कि पेपर में कुछ ना कुछ तो कर लेंगे ना। तो you have to make sure the next step, पहला स्टेप क्या है? Yeah, perfect. Knox, whatever your name is. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? क्लैरिटी। सेकंड स्टेप ट्रैफिक लाइट। अगर आपको पता है कि अब आपको देखिए क्लैरिटी है ना, दिस इज कंटिन्यूड, दिस इज लाइक अ ब्रिज विद क्लैरिटी। अब आपको पता है, आप क्लियर है कि आपको कौन सी, देखिए आपका जो पूरा ग्रेड आता है ना, एक वर्ड पे आता है क्लैरिटी, एंड आई एम गोना, ये सब चीजों को मैं लिंक करूंगा उसी वर्ड के साथ। अब आपको पता है, नाउ यू नो कि व्हाट यू डू नॉट नो, तो यू विल फोकस ऑन दैट। सही है, ये वाला समझ आ गया पॉइंट सबको? सेकंड स्टेप, इस सेकंड स्टेप क्लियर एवरीवन? क्या आप लोगों ने करना क्या है, आज अपने सिलेबस निकालें, प्रिंट करें, रेड ग्रीन येलो, 5 कलर्स किधर आगे, शायद 3 कलर्स होते हैं। आपने मेरे ख्याल से ज्यादा लेवल्स बना लिए हैं फिर, बट आप 5 करे 10 करे वो वैसे होता है, 3 कलर्स ही होते हैं। यू आइदर नो समथिंग, यू आइदर डू नॉट नो समथिंग, और यू आइदर नो समथिंग ऑफ समथिंग। सही है, तो ये हमारे पास 3 होते हैं। तो यू 50 दिन रह गए, 55 जितने भी रह गए, ठीक है, मतलब वो दैट्स नॉट मैटर। अब आप लोग देखें कि अब आप लोगों ने फोकस किस चीज पे करना है। तो पहला हमारे पास क्लैरिटी है, सेकंड ट्रैफिक लाइट। अब जब आप ये रेड वाले पे आ गए, अब आपने रेड वाले करने कैसे हैं? No, mocks are not important. Remember, yeah, Maz, I also want you to give some input on this. You never prepare for your mocks, sorry. You prepare for your CIEs. ये मेरी बात याद रखें, आप मॉक्स में अपेयर नहीं हो रहे, आप CIEs में अपेयर हो रहे हैं। Sir, अच्छा, and for everyone, this point is really important कि आप लोग की बात समझें कि even at this point I'm getting a lot of messages from students, sir mock start हो रहे हैं, next week paper है, how do we prepare for it? Okay, you can prepare 2 ways. One is कि आप अभी खोले book, you open up those marking schemes and आप रट्टा लगा रहे, you're just learning it and you do not learn the basics or the foundations behind them. And that's the reason you guys are like, okay, अभी mocks में हमें B या C ले लेते, so बाद में हम मेहनत करेंगे. But due to you all not understanding the basics the right way, आप लोग जब आगे advanced concepts जैसे 15 मार्कर आते तो अब सब रो रहे होते हैं कि किसी से नहीं हो रहा. The reason behind that is कि आप लोग की basics सही से नहीं develop हुई. So remember, these mocks are not important. We don't want an A star here and a B on the CIE official certificate, right? The other way is perfect. कि अगर यहाँ पे grade नहीं भी आता, we know कि we are building something step by step. तो जब आप किसी चीज के ऊपर step by step मेहनत करेंगे, that's going to take time. There is no shortcut for acing your mocks if you haven't done the work for in the last few months. So अभी you're not cooked. You're not cooked. So the best approach in this way would be कि अभी आप mocks को tension ना लें, आप जितना कर सकते हैं. आई एम रिकमेंडिंग दिस टू एवरीवन आउट देयर. अभी आपको सर अब्बास भी इसके ऊपर और बताएंगे कि अभी आप एग्जाम्स तक जितना प्रॉपर अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर कर सकते हैं कंटेंट को करें. वंस यू डू ऑल दैट, उसके बाद इवेंचुअली यू गोना सी दैट एक दफा आपके वो हो जाए तो CIEs तक यू स्टिल हैव 50-55 days. फॉर एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, if they study from the right source under the right guidance, I can assure you that even if you're just starting off, you can easily get to that A star wala point, and it's no something that super difficult. It's really an achievable goal. It's just that you need to stay consistent. It's just that you need to stay dedicated and you need to give it your best. Sir Abbas would have multiple students like this जो कि सर आपको पता होगा कि आपके पास मार्च में आके बोलते होंगे कि सर मॉक्स में ग्रेड नहीं आया, and eventually by August they're like sir A star आ गया. So it's just I had an A star and I personally remembered. I know this might be a bit you can say कि यार अजीब सी बात, but for a lot of my subjects, you know, I started preparing especially for my AS level all the way around March, start of March. So before March मैं mocks के लिए ऐसे पढ़ता था जैसे मुझे पता ही नहीं है, and then I used to start preparing and alhamdulillah I used to end up with those A's and A stars. So the whole thing is that even if you start at this point, it's not like the journey has ended, it's not like you are cooked, it's really a very achievable goal. So अभी तो आपको
जितना कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, डोंट वरी। सीएस का तो अभी ये सर आपको जनरल गाइडेंस देने के लिए आए हैं ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हेल्प हो। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू सीएस। आफ्टर सर हमें बता दे, फिर आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर सीएस, डोंट वरी, सब कुछ डिटेल में हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का फायदा ना हो ना। वी एट कॉन्सेप्चुअल केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स, वी नीड टू इंश्योर दैट यू ऑल एस ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस। सो मैं तो सीएस के लूंगा, बट सर अब्बास इज हियर हु हैज इवन नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। तो सर यही चीज है ना, देखिए गाइस, जो मैं बातें कर रहा हूँ दे अप्लाई फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर मार्क्स। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? आई नीड यस एवरीवन ओवर हियर। चाइना नाम रख के पाकिस्तान स्टडीज की टिप्स मांग रहे हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग किडोस, देखिए, फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी, सेकंड स्टेप ट्रैफिक लाइट, थर्ड हम लोगों ने कहा यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर मार्क्स। अब आप लोगों ने करना क्या है ना? देखिए, अब आप बात आती है पढ़ने की ना, एंड पास पेपर्स करने की। रिमेंबर, एक चीज जो बच्चे गलती करते हैं, यू आर रनिंग आफ्टर नोट्स, यू आर रनिंग आफ्टर नोट्स। कहीं से कोई अच्छे नोट्स मिल जाए, कुछ 6 रंगों में लिखे हुए नोट्स मिल जाए, दैट इज नॉट व्हाट यू नीड एट दिस पॉइंट। यू नीड सम बेसिक नोट्स। हर बंदे के पास बेसिक नोट्स होते हैं। टॉपिकल्स, हमजा टॉपिकल्स, 5 अप्रैल तक या 1 अप्रैल तक आप लोगों ने टॉपिकल्स करने हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, आप यील्डीज पे तब तक नहीं जाते होते जब तक आपके टॉपिकल्स कंप्लीट ना हो, ठीक है? तो यू फोकस ऑन योर टॉपिकल्स नाउ। खैर 5 अप्रैल मैंने बच्चों को, 1 अप्रैल मैंने डेट दी हुई है, मगर चलो ईद की वजह से मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा भी डाल दी कि 5 तक करें, ठीक है? हो जाएगा P1। अगर आप सीएस की भी बात करें, अगर मैं पर्सनली बताऊं, मैंने 2 महीनों में, मैंने क्योंकि कंप्यूटर साइंस खुद भी पढ़ा हुआ है, मैंने 2 महीनों में पूरा कोर्स पढ़ा था विदाउट अ टीचर। मैंने सिर्फ बुक से कोर्स पढ़ा था। आई गेव माय पेपर इन अक्टूबर नवंबर एंड आई स्टडीड ऑन माय ओन। ये मैं ओ लेवल की बात कर रहा हूँ, सीएस की, एंड आई गॉट एन ए स्टार। बिलीव मी, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू स्टडी। यू हैव टू स्टडी मार्किंग स्कीम। आप में सच बताएं, किसने आज तक मार्किंग स्कीम पढ़ी है, या किसने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है? बताएं, आप में से किसी ने एग्जामिनर रिपोर्ट आज तक पढ़ी है? एग्जामिनर रिपोर्ट किसी ने? यही चीजें पढ़नी होती है। दिस इज व्हाट गेट्स यू ग्रेड। आपने मार्किंग स्कीम पढ़नी है, आपने एग्जामिनर रिपोर्ट। व्हाट आई यूज्ड टू डू इट, मैं 5-5 10-10 साल के पुराने पेपर जो होते थे, मैं सिर्फ मार्किंग स्कीम पढ़ता था बस। आप मार्किंग स्कीम करें, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सही है। माय मॉक्स एंड ऑन 7th। आई फियर आई वोंट हैव इनफ टाइम। देखिए, मैंने आपको कहा है गाइस, टाइम इज योर करेंसी। यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बेशक अगर आप लोगों ने मार्क्स देने नहीं देने, दैट इज ऑन यू। आई कैन नॉट, वो आपकी फैमिली का मैटर है। मुझे पता है माँ बाप नहीं छोड़ते आप लोगों को ऐसे कि आप लोग छोड़ दें, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी। देखिए, अब इतना ये लैक ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है गाइस? यू नीड टू मेक श्योर कि बस अब ना आपने टाइम नहीं जाया करना। यू हैव टू लॉक इन, दिस इज द एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम वाला टाइम है, ठीक है गाइस? क्वेश्चंस अभी ना पूछे, क्वेश्चंस मैं आप लोगों से 5 मिनट बाद देता हूं, ठीक है? अब 2 बातें मैं इधर करूंगा। एक, हम में सर एनर्जी नहीं होती। सेकंड, सर दिल नहीं करता। तीसरी भी कर लेते हैं कि सर दिल, चलो वो दिल नहीं करने में आ जाता है। ये तो 2 बहाने हैं ना गाइस। अच्छा, दिल ना करना ये बहाना है, मैंने वो पहली बात ही कर दी कि बहाना है। दिस इज सम बुलशिट, मतलब एक्सक्यूज दैट यू गिव। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है? दिस इज लाइक अ डम स्टफ जो आप लोग कहते हैं कि बस दिल नहीं कर रहा। देखिए, दिल नहीं करता ना, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। मैं भी दोस्तों के साथ बाहर था, ठीक है? मैं भी सिर्फ इस 10 बजे इस सेशन लेने आया हूँ। यू देखिए, जिस वक्त जो काम करना होता है ना, वो आपने करना होता है। दिल करे ना करे वो अलग बात है। यू डू नॉट, इफ यू स्टार्ट गोइंग आफ्टर योर दिल, तो शायद मैं कभी गुड टीचिंग पे कभी दिल किया तो क्लास लूं, ठीक है? वरना भी मैं बाहर बैठा होता, कहीं आज सहरी पे बाहर होता, XYZ क्लास ना लेता, ना ये तो करता। सर अभी खुद ही बाहर दोस्तों के साथ ही था, मैं भाग कर आया हूँ कि क्लास लेट ना हो जाए, वरना लोग सब आइसक्रीम खाने जा रहे थे, बट आई वाज लाइक नहीं, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। रैंडम ना, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी जो नोटबुक है, ये देखें, इसमें मैं एट दिस पॉइंट आई लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब एवरी टाइम। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे नोट्स हैं। ये मैं यूट्यूब से ना, अभी एक नोटबुक खत्म हुई है, दूसरी मैंने उठाई ली है। कभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होता हूँ, कभी मैं फिजिक्स पढ़ रहा होता हूँ, कभी मैं सेल्स पढ़ रहा होता हूँ। यू हैव टू डू स्टफ गाइस, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। डेली इंप्रूव करना पड़ता है, ये मेरी बात याद रखें। एक दिन में आप अफलातून नहीं बनते हैं, सही है? बट यू हैव टू मेक श्योर ना, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, सही है? मोटिवेशन लाइक यू हैव टू, देखिए, मोटिवेशन जरूरी है, बट डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। करना है, दिल कर रहा है, नहीं करना, मगर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखें। अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं आप लोगों को एक कॉल दिखाता हूँ, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट ना, मैं आप लोगों को रियलिस्टिक में आपको बात बताता हूँ। मुझे उस दिन रात को कॉल आई, ठीक है? आई जस्ट वांट टू शो यू, आई एम गोना ट्राई, ये मैं नंबर, ये मुझे रात के ना 3:34 पे कॉल आई। दिस इज अ 17 मिनट्स एंड 52 सेकंड्स कॉल, ठीक है? दिस वाज अ स्टूडेंट क्राइंग, ठीक है, कि उससे पढ़ाई नहीं हो रही। मसले उसके कुछ थे, XYZ, दैट इज समथिंग एल्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि किडोस, आई डू नॉट वांट दिस टू बी यू ऑन योर एग्जाम रिजल्ट डे। आई वांट कि सब खुश खुशहाल हो, हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है?
ये जो बच्चे, ईमान जो आप कह रही है ना, ये जो एंजाइटी होती है बच्चों को, एंजाइटी इज व्हेन यू डू नॉट डू समथिंग। जब आप उसको ना तब मेहनत नहीं कर रहे होते तब आपको एंजाइटी होती है, ठीक है, ये वाली बात है। मरियम जो आप क्वेश्चन पूछिए वो माज आपको बता देगा, ठीक है, वो दैट इज जो सीएस स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो बाद में। हमजा दे डू मैटर, एवरीथिंग मैटर। सर हाउ मच टू स्टडी पर डे? गाइस एट दिस पॉइंट 8 आवर्स शुड, मगर क्योंकि आप लोग अब मेरे ख्याल से प्रेप्स हो गई है, घर में बैठे हुए 8 घंटा होना चाहिए, ठीक है। अब्दुल्ला डिवाइड, आई व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ता था, बिकॉज़ आई हैड 7 एट वन पॉइंट, तो मैं 3-3 पढ़ता था। आपके पास 5 है, आप 2-2-2 करके इस तरीके से करें, ठीक है। यस, ओके। इवन इफ आई एम वेल प्रिपेयर्ड मोमेंट, बिकॉज़ यू आर, आपने अपने को प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने उस पॉइंट पे बैठे नहीं, आपने पेपर में, आपने ना फुल पेपर्स नहीं किए हुए घर में बैठ के। देखिए प्रैक्टिस, आपको पता है लक क्या होता है गाइस? व्हाट इज लक? हाउ डू आई डिफाइन लक? लक इज बेसिकली जब आपकी प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलती है। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, आप तो अपॉर्चुनिटी आपको पेपर में मिल भी जाए ना, तो वो फिर मैच नहीं होता। वो आपका, जो बच्चे कहते हैं लक था, हमें सब कुछ आता था, कैसे आता था? पेपर में प्रैक्टिस की हुई थी तो आता था ना। हमजा नहीं आए, O3 पे फोकस करें, उसमें नहीं आए AS पे करें, आगे जाए आगे जाए, पीछे छोड़ दें अभी। सर व्हाट शुड आई डू? आई स्टार्टेड ये जी अली, ये रिलीज नहीं कर, बस यही बात है ना खान। देखिए लक नहीं है वो, आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये इधर हो गया। मरियम स्टॉप गोइंग टू योर स्कूल, टेल योर पेरेंट्स कि बस अब घर में बैठ के पढ़ने का टाइम है, आना जाना एनर्जी खत्म हो जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप लोग बहाने बनाते हैं। देखिए जितने आप लोग क्वेश्चन पूछे ना, मोस्टली आपको उनके आंसर पता है, यू जस्ट वांट समवन टू टेल यू दैट यू हैव टू स्टडी। आप लोग चाहते हैं कि आपके अम्मी अबू ना वो डंडा, मतलब दिल में, आपको पता है कसम से मैं भी चाहता था, मैं वैसे पढ़ता बहुत था, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेरे भाई भी है, बहन भाई भी है, ठीक है, एंड आई नो हर दूसरा बंदा दे जस्ट वांट समवन टू टेल देम बैठ के पढ़ो, ठीक है। ये वाली जो बात होती है ना गाइस, याद रखें, वंस यू ग्रो अप, यू गाइस आर अबाउट 15-16, एट दिस पॉइंट ना यू नीड टू रियली नो गेट योर लाइफ टुगेदर, ठीक है। यू हैव टू पुल योर ओन सॉक्स, मतलब अब आपको ना वो बचपन में अम्मी अबू जुड़ाव पढ़ा दे, नहीं, अब खुद करना पड़ता है, सही है। मैं कर लूंगा, खैर है, फिजिक्स हो जाएगी, ठीक है। नहीं, फतीन शेरवानी बिल्कुल मैटर नहीं करते, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अनलेस वर्ल्ड वॉर हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स नहीं मिलने आपको, ठीक है। बाहर में गया स्कूल, स्टॉप फोकसिंग ऑन स्कूल, स्टॉप, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर CIEs। गाइस इतने लंबे लंबे सवाल है, मैं बात करूंगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। इंग्लिश उर्दू के लिए पढ़ें, ग्रामर पे फोकस करें। आज भी मैं एक बच्चे को, मुझे कॉल आई थी, मैं उसको ये बताया था, यू हैव टू फोकस ऑन ग्रामर, फैंसी वर्ड्स सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। आपकी अगर ग्रामर सही है, अगर आप सही पंक्चुएशन इस्तेमाल करें, तलफ़ुज़ अगर उर्दू में कर रहे हैं तो गलत नहीं लिख रहे चीजें, जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक कर रहे हैं, एंड ऑल द जबर जेर XYZ आप ठीक कर रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। टॉपिकल 5 अप्रैल से पहले किसी ने ये रिलीज नहीं करने। जी अली मिर्जा कर दें, बट इफ यू आर स्टडीइंग, और ये ना हो मॉक्स भी छोड़ दें, घर में भी ना पढ़े, बेशर्मों में 4 बजे उठ, बेशर्मों की तरह 4 बजे उठ रहे हो, ठीक है, फिर वो घर में अम्मी आके आप लोगों को नाश्ता दे रही हो, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी डन एट दिस एज। मतलब आप लोगों को ना थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, मतलब आई रियली वांट के, मतलब एट दिस एज टू बी ऑनेस्ट ना, यू गाइस हैव टू बी मैच्योर, मैच्योर होना पड़ता है। ये ऐसे वैसे ग्रेड नहीं आते गाइस। 8 स्टार चाहिए, 12 स्टार चाहिए, तो उसके लिए वो वाली मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सर ये बताना, रात को पढ़ना ज्यादा अच्छा, ये वाला सवाल आई एम सो ग्लैड किसी ने पूछा है, जवाद मजर। सर ये बता दे, रात को पढ़ना ज्यादा या सुबह? मैं एक बात बताता हूँ, मतलब एक लेट सपोज एक स्टूडेंट है, मैं माज की जिंदगी लेता हूँ, माज, मुझे नहीं पता माज के घर का क्या माहौल है, मुझे नहीं पता माज ने घर में दूध रोटी लानी होती है नहीं लानी होती, मुझे नहीं पता माज के अब्बू सुबह उसको कहते हैं उठ के ना गाड़ी साफ करो या ना करो, मुझे क्या पता माज के घर में क्या चल रहा है। हाउ कैन आई टेल यू कि एट व्हाट टाइम शुड यू स्टडी? कभी सोचे ना ये बात, मुझे क्या पता आपके घर का क्या है। अब मैं अपना पर्सनली बताऊं, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू डू, मतलब अपने घर के चोर्स करता था, ठीक है, रोटी लाना दूध, ये तो नॉर्मल जिंदगी के काम होते हैं, आई यूज्ड टू डू दैट। तो मैं क्या करता था, मैं ज्यादातर सुबह पढ़ता था, कि जब मेरे घर वाले सोए होते थे। वो अलग बात है, मेरे दादा दादी सुबह 6 बजे उठ जाते थे, हमसे भी पहले उठे होते थे, बट मैं तब भी जरा जल्दी पढ़ लेता था कि मेरा काम हो जाए, ठीक है। बट फिर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज नाइट आउट, जब मुझे रात आसान लगती थी। तो ये आप अपने हालात खुद देख के करते हैं कि आपको कितनी कब आसानी है। कोई लोग दोपहर को पढ़ सकते हैं, शायद आप लोगों के घर में दोपहर को सुकून से आप पढ़ सकें, कोई रात को पढ़ सकते हो, कोई दिन को पढ़ सकते हैं, कोई सुबह रात XYZ सारी बात है, ठीक है। ये मेरी बात याद रखें, तो यू हैव टू सी के क्या करना है, ठीक है। सर पेपर 2 और ATP के बारे में बता दें। सर फीलिंग
Why? Because CI is at corner. Ahmed, you just know everything at this point. ठीक है? ठीक है, एमसीक्यू पेपर। ये जो फिजिक्स रिलेटेड टिप्स हैं वो मैं फिजिक्स का सेशन ले लूंगा, उसकी टेंशन ना लें। फिजिक्स रिलेटेड सीएस वाले ये बता देंगे, फिजिक्स का मैं बता दूंगा। मैं इधर आप लोगों के ना जो जनरल क्वेरीज है वो, अब्दुल्ला ये पता है ये एंजाइटी ये किधर से आती है कि व्हेन यू डू नॉट एक्चुअली पुट इन 100%, ये मेरी बात याद है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। यू नो यू डिड नॉट पुट योर 100%, आपको एंजाइटी होगी, लिख के ले लें, आपको रात को नींद नहीं आई। When you know you did not put your 100%, आपको नींद नहीं आती रात को, मुझे नहीं आती at this age, at this point in time। एक दिन इतना मेहनत करे, इतना काम करे, रात को नींद ना आए, फिर मुझे कॉल करना। मैं वैसे सोया हूँगा, मैं फोन बंद करके सोता हूँ, कॉल मत करना, बट बस ठीक है, ठीक है। बाकी गाइस जो हमारी फिजिक्स है ना, फिजिक्स से हम लोग एक सेशन लेंगे, कल ही मैं शायद ले लूँ, कल परसों में, वो हम लोग देख लेंगे। बस आई एम जस्ट गोना आंसर लास्ट 5 क्वेश्चंस एंड आई नीड टू लीव। मुझे वैसे नींद आई हुई है इस टाइम पे, मैं या तो नींद में करूंगा या तो मैं किसी कॉफी पीने जाऊंगा कहीं। हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन? अब्दुल्ला, नोबडी कैन मेक यू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, ये मेरी बात याद रखें। बस एक चीज याद रखें, आप जब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है? ये मेरी बात याद रखें। पहला क्या सिनेरियो है जी कि आपके माँ बाप बहुत खुश हैं। मेरी गाइस मुझे पता है, मुझे सबसे ज्यादा फीलिंग कब आई थी, जब मेरी नानी ने मेरी फोटो अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी। जब मेरी अम्मी ने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी, वो लोग कौन सा इंसान चाहिए? सॉरी, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से आपको कैसे खुशी होगी? मिलती है कि व्हेन योर पेरेंट्स आर रिकग्नाइजिंग, जब वो आपके पेरेंट्स देखें फखर से जाके लोगों को बताते हैं कि हमारे बच्चों का ये ग्रेड आया, उस दिन आपको खुशी मिलेगी जिस दिन हुआ। और सेकंड क्या है कि जिस दिन आपके मतलब जिस दिन नहीं आएगा रिजल्ट अच्छा, खुदा ना खास्ता खाकम बदहन, सही है, बट क्या होगा, पेरेंट्स भी खफा होंगे, आप भी खफा होंगे, आप लोग देख रहे होंगे आपके दोस्त पार्टी कर रहे हैं। मतलब मेहनत कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स बेटर टू क्राई व्हाइल यू डूइंग, इट्स बेटर टू सो क्राई। ये बड़ा मसला है कि जब भी कुछ पढ़ते हो तो फिर अब आगे जाते हो तो वो चीज भूल जाती है फिर। तो ये टॉपिकल मेरे ख्याल में बड़ा मसला है, तो ये नहीं करे, टॉपिकल करे, और इस मसले को कैसे टॉपिकल काउंटर करे, कॉम्बैट देखो, करे। यू हैव टू, अच्छा इसका मैं बता देता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज टू रिमेंबर थिंग इज कि अगर आपने एक मंडे को कोई टॉपिक किया ना, तो आप नेक्स्ट मंडे को भी उस टॉपिक को 5-10 मिनट्स दिया करें, रिवीजन कर लिया करें। इस तरीके से व्हाट, अच्छा मैं इसमें एक और आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स बहुत थे, तो मैं एक और चीज ये करता था, मैं एक दिन जो पढ़ता था, मैं 5 दिन बाद उसको 5 मिनट रिवाइज करता था। तो मेरा एक साइकिल था, मैं सारा का सारा मेरा रिविजन में रहता था, ठीक है। बट दीज आर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई डिड। मगर ये बात है ना गाइस, करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। पहली बात याद रखें, ये सारी बातें ना मैं आपको 1000 बात कर लूं, डज नॉट मैटर। मेन चीज क्या है, मेहनत करनी है आपने। मेहनत का कोई नहीं बदल नहीं है, मेहनत कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको 10 बातें बता सकता हूँ, ठीक है। मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है। लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन इधर देखे थे, मैं वो उसका जवाब दूंगा एंड दैट विल बी इट। हाउ टू रिटेन इंफॉर्मेशन? समराज, मैंने अभी आप लोगों को ये बात की है, बार बार एक चीज को हर 5 दिन बाद रिवाइज करें, 5 मिनट की रिविजन। रिविजन लिटरली टेक्स लाइक 5 मिनट्स। लेट्स सपोज मोशन पढ़ा, मोशन में ग्राफ्स पढ़े, ग्राफ के आपके 8 किस्म के ग्रेडियंट होते हैं। 5 दिन बाद एक बार देखेंगे, इट्स गोना टेक कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे 8 ग्राफ्स को देखने के लिए। याद ही करने हैं ना, देखें याद होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो, ठीक है। बट थोड़ा रिविजन करेंगे एंड यू हैव टू लॉक इन नाउ, दिस इज द एंड गेम, यू डू नॉट हैव टाइम। सर हाउ मच स्टडी यू डू पर पेपर एवरी डे? थोड़ी कैसे चीज को कैसे मतलब करे उस किसको? स्पेस फिजिक्स की थ्योरी पे भी बहुत ज्यादा रट्टा है और सारा। तो क्यों ये बात है ना, आज पढ़ लिया, वेल एंड गुड, क्वेश्चंस कर लिए, आज से 5 दिन बाद एक बार उसको फिर गो थ्रू करें। मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आती कि स्टार टूटता है, नेबुला बनता है, आई एम ए स्टार, रेड सुपर जायंट, जायंट, ये सारा समझ नहीं आता लॉजिक। क्यों ये ना एक सीक्वेंस है। अब वो वाली बात है, दिस इज अ वेरी फिजिक्स स्पेसिफिक क्वेश्चन। कल जो सेशन होगा उसमें आप ये मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। डू अटेंड द सेशन टुमारो, इसी टाइम के आसपास होगा, ठीक है, जो फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एंड एक लास्ट चीज मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूंगा, एंड आई एम जस्ट गोना एंड बिकॉज़ आई हैव टू लीव फिर, ठीक है। गाइस, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैव टू बी अ लिटिल मोर टफ ऑन देमसेल्फ, ओके। उनके लिए चूंकि वो ना स्कूल वाला भी डंडा नहीं होता, पेरेंट्स भी थोड़ा समझ नहीं आ रही होती, एकेडमीज भी मोस्टली नहीं जाते, या जो जाते हैं तो एकेडमी का चिल सीन होता है। You have to be very strict on yourself. You have to make sure that you sit down. You have to make sure that you do it. Okay? खुद ब खुद करना है, खुद ब खुद करना है। ये मेक श्योर करें guys, at this point ना you're grown ups, आप सारे ना माशाल्लाह बालिग हैं, दिमाग काम करता है, सारी अक्ल आप लोगों में है। You have to force yourself कि आपने पढ़ना है। नहीं पढ़ने का दिल करता फिर भी बैठे and study in short cycles. What I used to do, last tip मैं अपनी बताऊंगा and then I'm going to leave, ठीक है। मेरा क्या था, मैं पता है किस तरीके से पढ़ता था?
आज मैंने एक रात को एक वीडियो यूट्यूब पे लगाई थी, मैंने उसमें ये बात बताई है। मैं 40 मिनट्स पढ़ता था, 20 मिनट में एक सेशन देखता था, मेरी आदत थी। मैं 40 मिनट्स पढ़ता था और 20 मिनट में कोई भी मतलब वो सेशन कह रहा हूँ ना, सीजन देखता था, सॉरी इतना सेशन कह दिया कि मैं एक सीजन देखता था। ठीक है, मैं सीजन देखता था, क्या करता था मैं बताता हूँ। आई यूज टू वॉच ब्रुकलिन 99, हाउ आई मेट योर मदर, फ्लैश मैंने देखा था, लास्ट किंगडम मैंने ख्याल से देखा था, सूट्स देखा था, पता नहीं क्या कुछ देखा था उस टाइम पे ना। अर्तुगरुल भी देखता था, एक्चुअली मैं अर्तुगरुल भी देखता था, अभी मुझे याद आया। हाँ, तो मैं क्या करता था, मैं एक 40 मिनट पढ़ता था, 20-25 मिनट ना मैं ब्रेक लेता था। बट माय 1 आवर, वैसे कि मैंने 1 घंटा पढ़ा, मैं 40 मिनट पढ़ता था। बट दोज यूज्ड टू बी सो प्रोडक्टिव, यू हैव नो, आप सोच नहीं सकते। 40 मिनट फुल एनर्जी के साथ, 20 मिनट एक चैनल देखा, इंस्टा स्क्रॉल। अच्छा, लास्ट चीज, मुझे इतने पॉइंट्स आ रहे हैं ना कि मतलब इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ना, मैं 1 घंटा भी और ले जाऊं। वाइल एक मेरी बात याद रखें, वाइल आप वो कर रहे होते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वाइल यू आर ऑन अ ब्रेक, डू नॉट स्क्रॉल इंस्टा। ये गलती आप लोग करते हैं, आप लोग को लगता है इंस्टा स्क्रॉल करने से दिमाग को सुकून मिलता है, नहीं, आपका दिमाग फ्राई हो जाता है। ये मेरी बात याद रखें, दिस इज समथिंग आई लर्न व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स। मैं पहले ना उसके दौरान इंस्टा यूज करता था, फिर आई रियलाइज कि इंस्टा यूज करके मेरा दिमाग और फ्राई हो जाता है। वॉच समथिंग ऑन टीवी, टीवी लगाएं, लैपटॉप पे कोई सीजन देख लें, कोई भी देख लें, जैसे मैं करता था, साथ कुछ स्नैक्स कर लें। बिलीव मी, दिस इज कॉल्ड द पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, इफ यू फॉलो दिस, ग्रेड ना आए फिर आप सर मास को पकड़ना, क्योंकि मैं तो गाइस जा रहा हूँ। ठीक है, for all of those that do not know me, I'm Sir Sardar Ali Abbas Kazalbash. बड़ा लंबा नाम है, सरदार अली अब्बास कजलबाश। I'm the physics teacher, I'm MD of Conceptual, managing director of Conceptual Academy. मैंने खुद भी OA लेवल किया हुआ है, 12 स्टार O लेवल में, 4 स्टार A लेवल में। सर चैनल का क्या नाम है, मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ, सरदार ऑफ फिजिक्स। बड़े मजे की बात, ये सरदार ऑफ फिजिक्स नाम माज ने बताया था मुझे। ठीक है, ये नाम भी जो मेरे चैनल का है ना, ये माज ने रखवाया था। ठीक है, तो ये चैनल का नाम है। अगर मैं करूं तो मैं जरा आप लोगों को लिंक भेज देता हूं चैनल का। इसमें मेरे काफी ज्यादा ये जो सारी टेक्निक्स होती है ना गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, ये टेक्निक्स रियली गो अ वेरी लॉन्ग वे। दे हेल्प यू, दे दे मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। याद रखिएगा, अगर किसी बंदे का ना कोई होता है ना, व्हाट डू यू कॉल, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस स्पीक्स। इतनी मैं आपको 1 घंटे की और बातें बता सकता हूँ, बट नाउ आई बिलीव इट्स टाइम फॉर कॉफी। मैं जाता हूँ, या तो मैं अभी बाहर जाऊंगा, सिप जाऊंगा, जो इस्लामाबाद वाले उनको पता है फेट। अकेले अकेले सर, पेट्रोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा पेट्रोल है मिल सर, रहा क्यों नहीं मिल रहा? मिल रहा है मिल दो रहा 2,000 का। 2-2 हज़ार का? चले, मैं निकलता हूँ, मैंने 2 दिन से निकला नहीं था, मेरा दिल कर रहा था कहीं दूर जाने को। हाँ, इस्लामाबाद रात को ही आजकल एक्टिव होता है, कहीं जाके कॉफी पीते हैं। चले गाइस, बाय बाय, सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टेक केयर। सी यू मेरी जान। Alright, Assalamualaikum once again. कैसे हैं everyone? So it's time for you all to now lock in for CS थोड़ा सा. This was Sir Abbas का session. He wanted to share some guidance tips with you all, and I hope कि आप लोग को अच्छे से सीखने का मौका मिल गया. And now it's time for me to take over. सही है? So just to add a bit, Sir Abbas ने बोला कि नाम मैंने recommend किया था. It was basically one another student, and बस उनके साथ साथ मेरा नाम भी सर ने बस कर लिया, लेकिन it was basically credit उसको जाता है, not fully to me, but yeah. अच्छा यार, वो बेसिकली बस ये पहन लिया था, I don't know whatever you want to call me, हबीबी मरहबा कैफा हालुका, but yeah, अस्सलाम वालेकुम everybody, my name is Mohammed Maaz Munir. I'm the CS instructor here at Conceptuals. I have a top in Pakistan distinction in computer science. It's 10:37 p.m. And now we're going to first of all jump into a bit of concept as related to how you all should be studying. So yeah, now आप लोग ये general मसाइल सारे address कर लिए सर ने. अभी हमने थोड़ा specific होना है. We need to lock in. We need to see that if you are cooked at this point, if you are literally cooked, if you are feeling like we are unable to solve those complex questions, we are unable to solve those 50-marker questions, how can we basically implement a guidance plan or maybe follow some technique and everything? Sub discuss hoga everything till 15 marker. Isliye basically for our registered students, every week we have a session on Sunday for 1 hour, and wahan pe hum past paper questions kar rahe hote hain. So I had this plan ke why not extend that to maybe 2 hours. So today this class is going to go till 12 a.m. inshallah, and I'm going to keep the next 30 minutes first to discuss some sort of general guidance tips, and then we can move on towards the complex 1D arrays questions. I'm going to give you a quick overview in within 5 minutes. I expect you all to basically know kya scene karna hai, kya nahi karna, and then uske baad wo karenge. Perfect, Iman. Perfect. Yeah, only 1D arrays. We're going to do practice questions to ensure कि आप लोग का command अच्छी तरीके से बन जाए. Now, first and foremost,
Computer science, a very easy subject, a very, very easy subject. ਉਹ You might feel ਝੂਠਿਆ like ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ it's super easy, everybody, for everyone. Let me tell you, आप लोग को जितना भी मुश्किल लग रहा हो, जितना भी मुश्किल लग रहा हो, I'm telling you, it's just कि आपने सही तरीके से समझा नहीं है इसको. And that's the most important point which I want to discuss today. The thing is, for a lot of students, they feel like कि computer science काफी मुश्किल है. They feel like, okay, programming is something totally new. हमसे तो नहीं होनी, ये होना है, वो होना है. But you know what's the main reasoning behind that? It's basically यही कि आप लोग proper सीखने को ready नहीं. We all saw it just a while ago. But जो होता है, never mind. Let's ignore such thingies. But now coming to the main point, first and foremost thing, whether it's paper number 1, whether it's paper number 2, I always emphasize this one thing: keep your base as strong as possible. By this I mean that when you open up your harder education book, I hope majority of you would be learning that you in your schools or wherever you are, whatever resources you are using. When you open up a book, you're going to see कि आपने एक topic पढ़ लिया, you might read the next one, especially in paper number 2, when you open up chapter 7, chapter 8, you're like, bro, this is so easy. Like, इसके अंदर मुश्किल क्या है, bro? It's saying that input this, if statement, and blah, 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 blah. And you might be like, sir, it's really easy. I understand all of those concepts. But then when I get to the questions, when I get to those papers, I'm unable to solve any of the questions. So the first and foremost thing which I want to start off today is that Syllabus ने एक बात की थी about clarity. This clarity is a really, really important point. It's really important that you are super clear about your syllabus. In the group, I hope you all are a part of our community group. If you aren't, I'm going to share the link. आप लोग वहाँ से join कर सकते हैं. Otherwise, you can reach out to me. Paper 1BC में ही आएगा, सब कुछ cover होगा. Don't worry, सब cover होगा. सही है. Yeah, this session will be uploaded on YouTube, inshallah. So don't worry. We're going to do 2D arrays in our classes. Kal se Monday se inshallah, for the registered students, by the way. But now the thing is, you need to be super clear. Now in the group, a lot of students are asking the question, sir, are input-output devices working included? Bhai, your teachers are like, okay, it's included, aap log karo, because there is no proper evidence. But if your examiner's very certified sort of document, which is known as syllabus, states that it's not required, to aap kyun seekh rahe hain? A question, right? You need to save your time. Now, it's the end game, just the way Sir Abbas said. It's the time where we lock in the right way. I'm going to share the YouTube channel. Ruko main aap log ko link share kar deta hu. You can just, the recording would be uploaded there. Just give me a minute. But now the main point up here is the very, very important point. Just give me a minute. Yep. So let me just copy this. The main point is कि अभी आप लोग ना आखिरी point पे आ गए. And in the next 2 months, we don't have much time to waste. When I say we don't have much time to waste, this means that we're going to learn everything from the base, and we're going to ensure that we only study the stuff which is going to be tested in exam. And to help you craft the most ideal plan, working of storage devices is included. It is included. Questions end में होगा, अभी मैं थोड़े general से वो बता दूं, then I'm going to come to your questions. से फिर आप सबके questions अच्छे से discuss हो जाएंगे. The first and foremost thing, for whatever subject you have, whatever subject, start creating your plan using Cambridge official syllabus. The Cambridge official syllabus is the best guide you need at this point to ace your exam. So if you just open up a syllabus, let me show you a second. Let me open the Cambridge syllabus for the 2026 examination. So you see, it sort of explains everything you need to be aware of. Let me start screen sharing. Chrome tab and your syllabus. Open over here. Open. Okay, let me just share this. So it's this one. You guys can see the screen, right? I hope so you can. Why isn't this opening by? Let's open this. So this is your official syllabus. You can open it from the Cambridge website directly. And once you open it, you're going to see that for whatever subject you have, you can basically, how can you access your examiner report? It's super easy. You write the exam paper. So like I'm doing summer 2025 paper. So I would be like 0478 or 2210, whatever your exam code is, followed by the year number, so that it's like summer 25. And then you need to write examiner report, or the short form ER. The ER indicates that it's an examiner report. First and foremost thing, for whatever subject you're preparing, especially for computer science, this is really important. It helped me with distinction. It helped me with a lot of other things. This document is what you need to ace your exam. I'm telling you.
आपने जाना है, you need to open this up, you need to go down a bit, and you're going to see that examiner साहब ने खुद ही सब कुछ हमारे explain कर दिया. They were there to support us. And when I say they were there to support us, I mean this thing. Now, this is exactly what you should be aware of. You should know what number systems are. You should be able to solve all these points. So you should be aware that, okay, any form of the data that needs to be converted to be binary is basically converted to binary so that it could be processed by computer. So if a question of 1 mark pops up in front of you and it says that, why is your data required to be converted into binary? So a lot of you would be like, sir, circuits, maybe it's something else, maybe it's something that. But bro, the answer literally lies within the syllabus. You can clearly see that in the syllabus, it's mentioned that any form of data that needs to be converted to binary is basically done so that the computer can process it. And just like that, throughout the whole discussion or throughout all these notes and guidance sections within the topic, you will basically find out, oh, this is one element which I haven't studied. So let's say you were studying let's take chapter number 3. So that day a student mentioned in the community group, sir, our teachers are like, examiner ne abhi tak kuch bataya nahi hai, and so it's better that you do learn the input output devices working, sahi hai, and that you should basically memorize those so that you're on the safe end. Why are you wasting your energy? Now let me show it to you through the syllabus. Sahi hai. ASCII value, no, you are not required to know ASCII values. Sahi hai. Now the thing is, if you go up here, what does this say? Input and output devices. Candidates should be able to understand what it meant by an input device and why it is required. Which basically in simple Urdu alfaz means that agar aap barcode scanner ko padh rahe hain, what is a barcode scanner and hame barcode scanner ki zarurat kyun padegi? Why do you need a barcode scanner? This does not mean that you should be aware of how it works. Now, if I open up an older syllabus for you, let's say 2016 syllabus, that clearly mentions. So now, if you want to show this to your teachers, because definitely I know a lot of your teachers are not aware of this, and they're sort of for no reason pushing you all to basically learn this. So, aap unko ye bata de sir that the older syllabus, I hope so I can find the syllabus. I guess this is, yeah, I hope I can find one. Otherwise, pata nahi kidhar gaya pichla syllabus 0478, or I can find 2210. But yeah, the other syllabus, the older one, basically it clearly mentions, oh yes, we do have it up here. So let me share this. Now this is from 2016. This was the syllabus that was basically introduced at the point when your exam papers have questions related to how printers work, how these screens work, and all that stuff. If I look up here and I focus upon this, if you go to chapter number, I guess it was hardware, right? So back then it was a bit different, but you see, it says input devices, and candidates should be able to describe the principle of operations within the bracket. What is this? How each device works. So the examiner themselves clarified that, brother, you need to memorize how a specific input device works. Now, in the one which we have right now, the latest one, the 2023, the 2026 one, this. Now, it's up to you. Just have a look at this. There's somewhere out here, it's mentioned that you need to be aware of how your whole input-output devices has to be memorized. No, right? So the point here to note is that whether you're using the book or whether you're using whatever resource you might want to go with, whether it's your teacher notes or whatever, you need to keep the syllabus alongside whatever you're learning from. Now, the book, the Harder Education book, it has some extra information. I personally studied from the Harder Education book, and it basically had extra information. Ayan, what do you mean by LRN candidates? If you can kindly let me know. Then I'll start. No, yearlies pe bhi nahi aa raha. We're going to come to that too. See, yearlies ki abhi baat nahi hai. Main wo bhi bata दूं. Why not? Why not? Why not really? Now, the thing is, if you look up here, it clearly mentions this. Now, if you're learning from the book, a lot of you would have this one question. Even your teachers would be saying that if it's not in the syllabus, why is it in the book, right? So if it's in the book, it's because so that you can learn it. So the book is not like a fully ideal representation of what might be tested. There are extra information within the book which are only included so that you can understand it the right way. So yeah, otherwise it's not necessary. For that reason, first step for today's class would be keep the syllabus alongside you. If you do not open your syllabus while studying for whatever IGCSE O or A level subject you have,
you're sort of missing upon some really important, useful things. Point number 2, how to study the right way. So I'm going to share the good notes application. So आपको अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ how do you study the right way. So I hope you can see the screen, right? P1 के लिए we have uploaded our whole playlist on our YouTube channel. You can watch that. We explain everything really well. And अच्छा, note, short, सब कुछ सब पे आते हो. Don't worry, सब discuss करते हैं. So first of all, we will be basically starting off with a scenario where, let's say, you're cooked. Okay. So I say that I'm very much cooked. I am Maaz Munir. I have to study for my exam. I have my computer science exam, and I'm sort of cooked. So if I'm sort of cooked, I might be like, okay, bhai, grade nahi aa raha, what will I be doing? Yaar, I had to get an A star, ye maine time kyun zaya kiya, and all that stuff, right? I get that. I've been through what you all are just facing. I've been through those crackdowns. I've been through that time where I was like, nahi aayega A star. I've been through that times. Okay, yeah, if the syllabus is same, even it's sort of general tips, so koi masle ki baat nahi hai, aap le lo, it's going to help you either way. So if you're cooked at this point, it's 8th of March at this point. I basically मैं सब बता दूं, अपना plan start करता हूं. First, let me address, if you're cooked, how are you required to study at this point? So now we are currently on 8th of March. Now the point here to note is, I don't know, ये थोड़ा सा performance lag क्यों हो रही है? Let me see. Oh, थोड़ा सा, I guess it heated up for some reason. But never mind. So yeah, सब मैं बता दूं, other subjects के लिए भी बता. So now let's say whether it's computer science or whatever subject it is, let's say it's 8th of March. Because it's 8th of March, you're very much cooked. You feel like कि यार नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँगा? Now the thing is, first and foremost, the next 1 month needs to be used to learn concepts. 1 month for whatever subject you're preparing for is basically required for concepts. Now, if anybody of you up here has aced their mocks, good for you. You're already done with this part. But for a lot of you, I can understand आप लोग के mocks के हालात अच्छे नहीं गए होंगे. And the thing is, I want you all to quickly send a message in the chat box. मुझे ये बताओ, if you have to rate your preparation on a level of 0 to 10, with 10 being, let's say, an A star distinction level prep, or maybe and like I say that 4, 3 being something like a C, where do you rate yourself right now? Shabash sab log, jaldi. All right, so we have a lot of 6, we have a lot of 5s. Now the thing is, अगर आप लोग 4 से कम पे हो, या you are around 4, 5, तो computer science में, and if you're at 0, then listen up. It's really important that you learn the concepts, whether it's paper 1 or it's paper 2. The next one, hold on. This one plan which I'm just sharing with you all, it's for the students who are at a level of 5 or below. You haven't covered concepts as of now. Otherwise, if you had learned the concepts and आपकी application part weak होंगी, no, topical you should be basically aware of the general content. So आपको content पता हो, सही है? If you're not aware of those content, this means you are on a score level of 5 or below. The next 1 month, this is only if you're really cooked. If you're really cooked, the next 1 month has to be used for concepts. Now I know if I just open up my whole course for you all, you would be sort of shocked. You would be like, sir, if someone joins your course, apparently they have to watch so many videos. So if they have to watch so many videos, I get it, it's going to be a bit challenging, but at the same time, it's point that you basically need to lock in. So if you look up here, this is our portal for the students who take our live classes. And you see that up here till now, we have covered till chapter number 8, and we have a lot of content for chapter number 1. It's perhaps a lot, but if you lock in right now, you're going to see that inshallah, you can do it. It's not like it's possible. It's not possible. I, at many occasions, like aap log ko bata raha hu, for all those who might have been receiving a grade like a C or maybe a D in their mocks, a lot of my friends ended up with C's and D's. So a lot of my friends ended up with C's and D's in their mocks. And you know, they got an A star in CIs. How? The mocks end towards mid of March or maybe late March. Jesse wo khatam hote, they have like 1.5 months. Sir Abbas has already
shared his insight and provided the tips. If you have missed it, no problem. The recording would be uploaded on the YouTube channel. तो आप वहाँ से देख लेना. सही है. Now the point is कि first and foremost concept सीखो. For one whole month, आप lock in हो जाओ, learn all the concepts. अब question is going to come up, concepts कहाँ से सीखे? Now you have basically 3 resources. सही है. One is if you go to your school teacher, सही है, school teacher. If your school teacher is a good one, perfect. If it's not, still you go to your school teacher like, sir, ma'am, mujhe bata dein how to do it. That's one way of learning concepts. The other way is you make use of book and you make use of AI. Book plus AI is a really, really crazy combination. Yeah, bilkul harder education wali book achhi hai. Sahi hai? Many, this is a plan if you're absolutely cooked. Only if you're absolutely cooked. For those who are somewhat good, uske liye main phir se bata do. Sahi hai? Now that's the problem, Usman, the point which you mentioned, that teachers are unable to grasp the concept themselves. So in that case, आपने इन दो में से तो कोई कर सकती है, या फिर तीसरा ये कि you take some sort of external help. So by external help, you mean I can say that you join some teacher course, or maybe you watch their recordings, or maybe whatsoever, whatever it suits you, right? So now, if your school teacher is good to go learn the concepts, जाए उनके पास, go to them, tell them that भाई, I need to understand this concept. आप मुझे कराओ. Like you should just get after them. At this point, your mocks are not important. Getting a bad grade in mocks is not that much of a game changer than getting a bad grade on your CIs. सही है. It's really important कि आपको ये बात पता हो. मैं आता हूँ अभी आपके point पे आता हूँ how to train GPT the right way. सही है. The second way is book plus AI. So it's basically for the students who are somewhat good with the concepts, but they know the basics, they have a good introduction into the world of CS, but they're unable to express their knowledge on an exam paper. If you're at that point where you feel like यार मैं कर लूँगा, it's something आपको खुद पता लग जाएगा. सही है. जिन्होंने paper number 2 start नहीं किया, don't worry, I'm gonna come to that too. सब easy scene होगा. सही है. You're going to, if you want to make use of book plus AI, how are you going to do it? First of all, if you go and open up Gemini or maybe Claude AI. I personally would recommend using Claude. It's really good. Or even if you have GPT, Chat GPT, you should read a concept from the book. If you don't get anything, you need to ask AI for explanation. So you might be like, if there's a concept like, let's say, how is let's say malware different from some sort of cybersecurity threat? Now, this is a question. A lot of you, sometimes a question comes up that give us 3 examples of malware. Say to aapne malware ki examples deni hoti, malware ki. And students, what they do? They mention phishing. Now, phishing does not come under malware. But some students, they sort of memorize it. They're like, okay, ye to humne yaad karna hai, ye kya hai? I'm not sure the reasoning behind it. Or like, if I give you another example, you might be like, okay, let's say, आप लोग binary के अंदर, we always say that the most right hand side one has the value 1, 2, 4, 8, 16 and goes like that, right? So if I say that I have something like 0, 1, 1, 0, we say this one has the value 1, this has the value 2, this has the value 4, this has the value 8, right? We always say it this way, 1, 2, 4, 8 and it goes on. But I have a question for you all. Have you ever wondered why it is 1, why is it 2, 4, 8? Why isn't it 1, 3, 9, 16 or whatsoever? There is a proper reasoning behind everything. Exactly, it's a base 2 system. Exactly. And because it's a base 2 number system, you go and it's like, you can basically do 2 raised to power 0 for position number 0, 2 raised to power 1 for position number 1. And exactly the way I taught you all in the classes. For those who were a part of my course, remember, I shared this one equation with you, even though it's not something officially being taught, but value equals to 2 raised to power position. This was a formula created by Sir Maaz Munir. I created this equation, value equals to 2 raised to power position, where 2 is basically your, what do we call it? Base, and position indicates the specific place where it is. This might be position 0, position 1, 2, and goes on, right? So, is tarike se, once you understand everything with the basics being strong, I can assure you, aapki aadhi preparation to hogi. And I'm not aiming for an A star here. I'm aiming for a distinction. So, if you understand every concept, you make use of the book, and at the same time, you, let's say, make use of YouTube, which is also a great asset. I've been making use of YouTube throughout my IGCSE and A-level tenure, and it has been really, really helping me. Gulela, the question which you said about tips about file sizes, iske ek shortcut hai.
मैं बाद में बता देता हूँ, सही है. I even shared it with my students and it was so helpful to the students who are taking the class, official registered students. आपको याद होगा the cancelling tip which I was talking about, right? So आप लोग के साथ भी share कर लेते हो, don't worry, सब उसमें हो जाएगा. Even it's in my notes. So if you are part of my group, the community group, it's free and open for all. If you are not, तो मुझे बता दो, मैं link भेज देता हूँ. But you can basically sort of join that, and उसके अंदर I can share my notes. Acha, Azizi, we have a lot of free resources available too. Our YouTube channel has a lot of free content. Then I also sort of provide free guidance in the group too. So our group join and you can get a lot of free stuff too. So don't worry at all. So, now, and then the third way of basically understanding concepts the right way would be using external help. By external help, I mean maybe you want to go join someone course. We will be having a past paper session inshallah next month. Say yeah, of course, मुझे tag करके भेज देना. I can reshare the notes. Okay, मुझे कोई tag कर देना, I can reshare it then. Now, by external help, I mean maybe you want to go. You can join somebody. Yeah, it would be paid. It's basically going to be आप किसी academy से लेते हैं. Maybe you want to get some recordings. So like if anybody wants to join our course right now, you're going to get all the P1 recordings for free. You're going to get, you just need to pay for the remaining 1 month course. And आपको पीछे जितने भी paper 1 के content, everything आपको free मिल जाएगा. But this 1 whole month, from whatever method you want to make use of, should be used to understand concept. This is only if you're cooked. Then once done with that, by the start of April, within this, once you get to April, in April, your computer science have, you know how many topics? They have basically 10 chapters. 10 chapters. In these 10 chapters, the first 6 are for your paper number 1. And then basically you have, inshallah, iman acha hoga, don't worry. Yeah, it's free to join. The WhatsApp community is open and free for all. कोई मसले की बात नहीं है. Ahmed Aman, you can ask someone in the group. आप message send कर देना. Someone can share the topicals. काफी बच्चे करते रहते हैं share. Now the point here to note is that by April you would be done with the 10 chapters. Now what you need to do is the next 10 days should be spent for topicals only if you're cooked. So it's 8th March. By let's say 5th of April you should be done with the whole concept. And then from the 5th of April till let's say 15th of April, you need to do topicals, 1 topic per day. Why am I recommending this? So that you can master this stuff. Now, this is really important. Topicals are really, really important. People are like, okay, now finally addressing this one very big question. Some students have started doing past papers. You know, a lot of you might have started doing past papers, which is some sort of good. It is sort of good, but then there is one problem with it too. Now, the syllabus got updated in 2023, say 2023. So we sort of have papers from March 2023 till let's say by USCIs, we can also get it till March 2026. That's basically 2023 ke paper, 2024 ke paper, 2025 ke sare paper, and then 1 paper of 2026. This is basically 22 papers. 22 papers. Now, in these 22 papers, if you sort of start off the right way, you're going to see that paper number 1 is not that difficult. I know, thoda sa ratta hai, thoda sa it's sort of confusing, but paper number 1 has a specific technique. You know, if you want to learn paper number 1 the right way, you need to follow this technique of first of all, watching the content, which basically means that your concept needs to be super clear. So if I ask you afterwards that, bro, in chapter number 3, we studied something as SSD. What's the general difference between SSD and a hard disk? That's great to know, Abdullah. I hope it's sort of helpful. Sir, could I like this, like 1 chapter in a day and doing the topic? Bilkul, of course, that's also perfectly fine. You want to follow it this way, or you want to keep it from 5th April to 15 April and you want to do it in a way 1 topic done, followed by topicals. 1 topic done, followed by topicals. Either way, by 15 April, you should be done with topicals alongside the concepts. And it's really doable. I'm telling you. आप लोगों को एक मैं technique बताता हूँ. A lot of you might be at this one stage के आप लोग maybe, I'm not sure how many of you might be watching. Yeah, chapter 3 is the longest one. It's अच्छा बीरा उस question को भी याद है. That's a good question. But there is this one tip for everyone. I'm not sure आप लोग में से कितने 1x पे देखते हैं, but I personally have been watching videos on 2x. You know, and at the start it might feel like आप नहीं सही तरीके से समझ पाते, but eventually your brain gets trained to it.
And if you can allow your brain to get trained to it to an extent the way I have trained my brain, Allah ke fazal say, to a 3.5x speed or a 3x speed at this point, because I had to like मेरी अम्मी आके बोलती थी बेटा तुम सुन क्या रहे हो, and I was like, I can understand it, I can understand what's going on. What I'm going to suggest you is कि जितने आप YouTube से वीडियोस देखें, try to slow and exactly Samraj, you got the point. It was 3x it says then, but sort of you should sort of increasing the speed of it rather than watching it at 1x. Go for 1.5x, go for 2x. Why? शुरू में अगर समझ नहीं आती थोड़ा slow करो. You should gradually increase. So maybe you started off with 1x, and then in the next 5 minutes you increase it to 1.25x, then in the other 5 minutes you increase it to 1.5, then 1.75, and eventually you go to 2x, and you like बस इतना हो गया. सही है. So if you gradually increase your speed, you're going to see कि आपका mind उसको समझ पा रहा होता है. And the benefit you get with that is that now if I uploaded my paper number 1 chapter 3 videos on my YouTube channel, or perhaps I guess I have my chapter 1 recordings uploaded, the newest session, and it has some sort of 9 videos, right? So each video might be of 1 hour. This basically means 9 hours. Now spending 9 hours on one topic is sort of back to back काफी मुश्किल हो जाएगा. But now the good point is, if you watch this at a rate of 2.2x, this basically means that you're going to cover everything in 4.5 hours. Now 4.5 hours basically means that if you were studying 2 hours computer science every day, let's say, because you need to lock in if you're cooked a bit, say, so rather than covering the topic in, let's say, 4 or 5 days, you're now ending the topic in 2 days. Big difference. So जहाँ पे आपका एक topic हो रहा था, you're sort of completing 2 topics in that time. And that's a big benefit, a big benefit. Azize, the question which you said, please list paper number 1 topics in order of their importance. You have 10, 11 questions. Say topicals बिल्कुल जरूरी है. Topicals are really important. Iman, if you feel like your playback speed से नहीं होता, आप slowly gradually increase करो तो उससे हो जाएगा. Guys, questions को थोड़ा सा slow down करो, थोड़ा सा. When I say कि questions पूछो तब पूछना अभी के लिए थोड़ा slow down so that I can answer the available sent question. Now the first point is, you have been asking this one question, and this is a question people again and again ask. What are the most important topics? एक बात सुनो. Tell me one thing. Is the examiner some kid? Is the examiner some dumb person? He gave you 11 questions, 10, 11 questions in the exam paper, and there are only 6 topics in your syllabus. How come do you expect that an examiner will be excluding a topic? There is no possibility, perhaps it's super duper rare, that they exclude a topic. And for that reason, because you're not aware what topic might be skipped, you are not allowed to take risk. We are not allowed to let our parents down. We are not allowed to basically let our own self down. I'm telling you, you're not doing it for your parents. You're not doing it for your siblings. You're not doing it for anybody else. You're doing it for your own self. Once you get those A stars, once you get those distinction, I'm telling you, that distinction helped me at places you can't even think. Say, getting an A star helped me to an extent where I had to pay 0 rupees for my entire A levels. Say, I did not pay anything at all. I studied for free. Why did I study for free? Because I studied for my own self. I gave it my best. And at this point, I'm currently studying at LUMS. I had 3 full rides from Hong Kong. I had 105% scholarship from a US university. That was a different story. I didn't end up going, and वो अलग कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा गपशप session में. But the thing is, I'm even though at this point studying at Pakistan's most competitive university. We have students having 5 A stars and all that stuff. But at the end, when you have those grades, it's going to help you. So if a student is applying to a good university and they end up don't getting that admission, it's not like aapke parents are definitely they're going to be sad, but it's you who are going to suffer more, right? So like if I'm studying at a very good institute, I'm getting opportunity to get into research. I'm getting opportunity to basically support you all. I'm getting opportunity to learn from the best of the best. At this point, we have professors who have literally come all the way from NYU, from MIT. All those, they are Pakistani professors, but at some point of their career, they were a part of those prestigious universities. So it is 100% possible to get a distinction in computer science if you're even starting from scratch, and definitely distinction is hard work followed by luck followed by prayers.
Ye three, if you want to have that secret formula to distinction, this is the formula for distinction. Really, really important formula. So if I have to create a mathematical equation to tell you how you can get a distinction, it's basically hard work. By hard work, I mean consistent amount of past papers, topical, ensuring your concepts are strong. And even if you start right now, this part can be easily covered up. Followed by prayers, दुआ जितने ज्यादा कर सकते हो, I'm telling you, prayers are going to make a very big difference. You might be thinking, by my paper number 1, yes, chapter number 3 has been fully uploaded. So ये fully uploaded. Topicals खुद करो. To IVs, I applied only to UPenn, and yeah, because मैं liberal arts ज़्यादा कर रहा था, and I did not get a chance to apply to the other IVs. But yeah, UPenn rejected me. Sad story, but chalo koi nahi. But yeah, the formula for distinction is hard work followed by prayers, and then definitely, of course, luck. And you know, this luck part, a lot of people say luck, you got lucky, you got lucky. So someone might tell me that, bro, you got lucky, you did so good extracurriculars, the way I guess someone of you mentioned, right, about my extracurriculars. Yeah, Abdullah Saeed, you talk. So there is a possibility you share my extracurriculars with someone and they might be like, this person got lucky, he got an internship at this point. This person got lucky, he got a distinction. I got lucky that I got into LUMS. I got lucky I basically got the chance to study the right way. I got lucky that I got questions which I knew. But you know, there is this luck part is sort of a combination which you get from hard work and prayers. We all know Allah is watching us. Allah is there who is judging us. He can see that if I'm willing to put in the effort, if I'm willing to lock in, even if I've wasted my entire O-levels or entire O3 year, if I'm willing to put in my best at this point and give it my all best by not only learning and acing all the concepts, but at the same time doing as many topicals as possible, by Allah khud aapko luck wala element dega. I was praying for a distinction the entire year. So yeah, I wanted to get that distinction. I gave it my best. So yeah, when we come to 15 marker 2, don't worry. So yeah, आज tips की बात होगी. I guess 1D arrays के concept नहीं हो सकेगा, but चलो कोई नहीं. It's helpful कि आप लोग को पता लग जाए how to study the right way. So yeah, the point here to understand is, बल्कि चलो कोई नहीं, थोड़ा और extend कर लेंगे. If we can support you, that is what matters. So yeah, so the point which is really, really important is that if you lock in right now and you trust Allah, and at the same time you give it your best, this luck part, it's automatically going to come to you, and you yourself would be able to ace your exam. So now this is the whole strategy about if you're cooked, aapne kaise karna hai. Now from the next month, ideally from the first week of April, we're going to be starting off our past paper session 2. And the reason why we are starting past paper session at that point is that once you get to that first week of April time, around 5th April, 5th to 15th April, you're going to see that you have almost 1 month till your CIs. Exactly 1 month till your CIs. Now the last 30 days, it's code Catalyst. I can send the link. Perhaps I even sent the link. It got pinned somewhere. Where did the pin message go? Yeah, let me resend it. Say, so if you're just starting off, आपने इस strategy को सबसे पहले follow करना चाहिए. That you need to first of all understand the concept. Followed by that, you need to do topicals, and followed by that, you need to get to past papers. Now, the very, very good question asked by Haider Rasool. कितने questions करने चाहिए? A very important question and a very good question, by the way. So the whole flow is going to be how you need to start off with concepts. You need to move towards topicals, and you need to do past papers. Now, a lot of students would be like, भाई आपने कितने papers किए हैं? Those students who are like, हम पढ़ते नहीं हैं, but then at the end आप लोग उन्हें साम बोलते हो, but वो चुप के हमारी classes में पढ़ रहे होते हैं. So yeah, but those students who are like, यार उस्मान ख्वाजा आपने कितने past papers कर दिए? Usman would be like, bro, I'm just starting off, and they would be like, oh yeah, I'm done with even 2015 का set. Oh, I've completed 10 years of past papers. So आप लोगों में से a lot of students, including me when I was studying, मैं WhatsApp group link भेजता हूँ, don't worry. A lot of the students, they get panicked. They're like, भाई यार लोग तो बहुत कुछ कर चुके हैं. I am cooked. मैंने तो अभी start करना है. What am I supposed to do? मैं क्या करूँगा? Am I cooked? Now the point is, and a very good question, firstly would be, how much topical are you required to do? मतलब topical के कितने questions आपको करने चाहिए? Now there is no set number for that, you know. It's not like you need to do 15 questions, you need to do 20 questions, you need to do 25 questions.
This is the link. I've sent the link for the WhatsApp group. If anybody wants to join in, it's open and free for all. You can share it with your friends and all, and it's going to be a very, very helpful society. You can say a group for you all to not only learn computer science, I also help you all with the questions and any queries you might be having. But now the important point, topicals kitne karne chahiye. Now, the extent to which a topical needs to be done is defined by you yourself. You know how? So like the way I used to do was, okay, I now let's say cover up chapter number 1. Don't worry, Iman, you're not cooked at all. Easy scene hai. So now you go open up my YouTube channel. You're like, okay, sir, I watched your entire videos of chapter number 1. I now understand everything. I've watched the topicals. Also, for all those who are learning the concepts at this point, open up my YouTube channel, and then you're going to go to that IGCSE O levels, a topical playlist. And in that playlist, you're going to see that I've uploaded 1 to 4 videos for every topic where I myself have been solving past paper questions. And that's for paper number 1. Inshallah, P2 ka over time you're going to add up, but for now it's only P1. But any paper number 1 topic you are studying, whether it's from book, whether it's from your school teachers, whether it's from no matter what source you're using, or whenever you cover up that, you first of all go to my YouTube channel, then you watch that topical video. Why? So that you get a push, you get an introduction to, oh, questions aise karne. It clarifies your mind that if a question comes up, I need to attempt it this way, I need to do it this way, I need to do that. It's going to give you that welcoming boost into the topic. Once done by that, you're going to open up your topicals. Now, topicals kahan se mil sakte? You can get a lot of topicals. Ek second, guys. Let me just send a message. Just give me a minute. Just give me a minute. Just give me a minute. So yeah, how you are required to do the topicals. So ab dekho, you can find multiple topicals. Ask in the group. A lot of students can share topicals ki PDFs. Otherwise, aap search kar do, just search of IGCSE or computer science topicals, and you're going to get a lot of topicals out there. So yeah, ab aapne karna kitna hai? Aapne karne at least 10 to 15 questions. Minimum 10 questions. Minimum 10 questions. Now, why 10 questions? In those 10 questions, and this applies to all the topics, so all the subjects, whatever it's physics, chemistry, maths, whatever. You open up a document and you're going to see that it has question 1 till question number 50. Ab humne kaise karna hai? You need to move in a way. You need to first of all do question number 1, then you need to do question number 3, then you need to do question number 6. एक दो का gap dekar karo, so that you do as many questions, because these topicals have one problem. You know, they basically within a topic, let's say chapter number 3 is now being divided into multiple subparts. We saw that chapter number 3.1 is related to computer hardware, so computer architecture, fetch, execute cycle, and all that stuff. Chapter number 3.2 is about these input-output devices, these mouse, these microphones, all that stuff. Whereas chapter number 3.3 is then related to data storage, these hard disk, SSDs, magnetic storage drive, these, what do we call it, SD card, XD card, all that stuff, right? So, jab aap topicals karte hai na, topicals usually combine all the questions together. So that's a very big problem. You know why? Because aap karte ho 10 sawal, pehle 10 sawal. When you do the first 10 questions, you cover up one type of questions, and this applies to all the subjects. And that is a problem. Why? Because you are unable to cover up all the contents within that specific topic. So my advice whenever you're doing topicals would be start off with question 1, slowly 3-4 के gap के साथ दूसरा करो, फिर 3-4 के gap के साथ तीसरा करो, 4-5, फिर मतलब question 1, question 3, question 7, question 9, question 11, and once you do 10 questions, now here is the main point. अब हमने लगाना है paper number 2 का if statement, the same case statement, conditional statement. Now you need to think, if
after 10 questions, if after 10 questions, exactly the questions are sort of repeating, they are repeating, and that's the reason why I'm saying कि आप एक question के बाद 2-3 का gap देकर अगला करो, because once you do that way, you're going to see कि आपके questions नए किस्म के questions आ रहे हैं, सही है? So आप new जितने ज़्यादा, बिल्कुल of course you should do those, any sort of questions. If it's in the syllabus, it's important कि आप ये confirm करें, you don't learn something which is out of syllabus. So like in the older topicals, you're going to find HTML structure question that's no longer in the syllabus, working question, those are no longer in the syllabus, TLS के questions, they are sort of no longer in the syllabus, सही है? SSL के हैं, TLS के नहीं है, सही है? So ये थोड़े से है, but if you are unsure of whether it's in the syllabus or not, you all have the WhatsApp link, सही है? बस आप सीधा साधा क्या करना है, आपने पिक्चर लेनी है इस क्वेश्चन की, you need to tag me with it and just write, sir, is this in syllabus? and मैं आपको confirm कर दूंगा. Sir, do you recommend me in this 1 month till first one topic in that? Exactly, बिल्कुल अहमद, fully recommended. Exactly. Topicals यही तो बोल रहा हूँ, topicals का कोई year नहीं होता, topicals का कोई year नहीं होता. You need to do 10 to 15 questions, and after 10 to 15 questions, you know, आपने बैठ के ये देखना है, can I do the next question on my own without referring to my notes, without referring to my syllabus, without referring to any sort of class revision notes or whatsoever, or without referring to the marking scheme. And if I do it like that, you're going to see कि आप जब marking scheme देखेंगे and you feel like, oh, I got the question right. If you get 3 to 4 questions correct consecutively, this means that you got the command over the topic, and boom, boss, that's it. Now move on to the next topic. Do the topicals till an extent where you can consecutively solve 3-4 questions on your own. This is the most important tip I can give you all at this point. If you sort of do not do it this way, तो फिर आप ये कि let's say chapter number 1 is something I find really easy. Let's say I find it really easy, but नहीं, I opened up a booklet and it has some 200 questions. Now I'm going to do all those 200. That's wastage of your time. Remember what Sir Abbas said. Now, at this point, you need to make use of your time in the most efficient way possible. And to ensure that you maximize your efficiency, you do not need to waste your energy on stuff that is not compulsory, right? That is not something required. That is not something जो कि आपको ज़रूरी है कि आप करें, सही है? For that reason, I would recommend कि आप topical सिर्फ उस extent तक करें where you get next 3 to 4 questions correctly. So लेकिन इस point पे RNTL is more useful after revising all the topics. अच्छा, Umar Farooq, the scenario which you are stating, that's sort of a bit different. If you have revised everything, you have sort of learned everything, still I would recommend, because you do have 2 months, only 1 month is enough for past papers. Only 1 month. So start off one by one. Heather, you should just start off with paper number 1 के topicals. Also, topicals are more or less, to be very honest, sort of more helpful. Fatma, this question which you send it in the group later on, and I can get back to it. Because this session is more about guidance session, so we're going to discuss general points. So if there is any concept related question, wo aap group mein send kar, then I'm going to get to you on it. So just the way Abir said, so do some of the questions from each. Exactly. Not some of the questions till an extent where you are yourself confident कि यार अगला question मैं कर सकता हूँ, which is only the case where you sort of get 2 to 3 questions correctly. Heather, that's the exact point which I'm saying. आपको topicals किसी year तक करनी ही नहीं है. आपने topical की booklet खोलनी है, आपने पहले क्वेश्चन के साथ बिस्मिल्लाह करना है, आपने देखा पहले का आंसर गलत, कोई नहीं, आपने सीख लिया, आपने दूसरा देखा आपको नहीं आ रहा, आपने नोट से देख लिया, आपने तीसरा किया, आप बोल रहे हो कि नहीं यार सर ने कोई नोट्स में इस तरह बोला था, आप वो खोल के कंप्यूटर पे देख रहे हो, आपने कर लिया. फोर्थ में आपको थोड़ा सा हो यार ये मुझे कुछ हद तक आता है, यू राइट 1 point करेक्ट एंड द अदर वन इज रॉन्ग, आप अदर सीख लेते. बट लेट्स से आप 10 सवाल करने के बाद यू ओपन अप क्वेश्चन नंबर 11 एंड यू लाइक ओ भाई इसका तो आंसर ये है, यू रोट इट, यू चेक इट विद द मार्क्स, परफेक्ट, यू गॉट इट करेक्ट, बूम, सही हो गया. देन यू डू क्वेश्चन नंबर 12, ओ ये भी सही हो गया, परफेक्ट, you open question number 13 और ये भी हो गया. So when you get consecutively 2-3 सवाल correct, तो बस फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपका topic clear हो गया. And the moment you feel like your topic has been clarified, you need to basically move on to the next topic. उसके ऊपर और time ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, सही है? So studying for topical needs to be done this way, smart, efficient, so that you have as much time as possible to solve past papers. ये नहीं करना कि आपने topicals को basically replacement ले लेनी है as in past paper. Topicals are one thing, past papers are a total different thing. So you need to just do topicals to an extent you get the concept firstly, and you feel a bit confident about your preparation in that topic. Sir, if we just revise the syllabus and we see the topical papers and you know that you can do the papers fully, so we should still do topics. Now, the thing is, Uzafa, in that case, I would recommend do like 4 questions per topic. So if you get all 4 questions perfectly for throughout the entire set of the topical booklet,
then you should jump on to past papers. But if you get something wrong, this means that there is some sort of lack, right? So उस sort के ऊपर आपको इस तरह थोड़ी सी एफर्ट खुद करनी चाहिए. एंड सर ये पर सेक्शन में इतने करने हैं पर सेक्शन में इस तरह करो. बिल्कुल. लाइक यू स्टार्ट ऑफ विद लेट्स से चैप्टर नंबर 3.1. चैप्टर नंबर 3.1 के अंदर आपने 5 सवाल की. यू डिड 5 क्वेश्चंस इन 3.1 एंड द 6th क्वेश्चन you open that up and you find it कि यार ये तो बहुत easy, I can easily do it. You do question 7 and you okay यार ये भी मुझे आ गया. You do question 8 and you are like okay ये भी मुझसे आ गया. So this means chapter number 3.1 boom, go to 3.2 and so on. आप करते जाओ and you're gonna see that inshallah if you start off with that scope right now, for those who are literally absolutely cooked at this point, if you plan on taking our recorded lectures for paper number 1, which we are providing complimentary given if you join our paper number 2 ongoing course, तो आपको क्या सीन होगा? Within 1 month, if you just watch those recordings and implement this topical plan which I'm just sharing with you, this topical plan, inshallah, if you complete it by 10th April, and I give you a paper on 10th April to solve, I can assure you आप 60 plus ले रहे हैं. I have a lot of students. Once we completed paper 1, I gave them 1-2 papers just for practice. And those students scored 60 plus, with some even close to 70. उन्होंने तो papers भी नहीं किए, 70 तक कैसे पहुंच गए? ये possible है? You might be thinking, sir, ये क्या सी बात है? उन्होंने paper भी नहीं किए, just concept सीख लिया and they're scoring 70. It's because they learned the right way. And if you don't learn stuff the right way, whether it's P1 or P2, आप नहीं कर सकोगे. So for whatever subject you're learning, वही बात है, mocks की वजह से अपने concepts को बर्बाद ना करना. Learn everything slowly, step by step, so that you master those concepts. Once you master those concepts, you can easily get to ace your exams easily. Easy scene हो जाएगा. सही है. Sir, but the topics of recent year are more. No, the difficulty is sort of maintained. सही है. Difficulty कोई ये नहीं होती. ये कोई इस तरह की बात नहीं है. But there is one thing. जो questions 2019 के है ना, those were basically based on a different syllabus. They had a different sort of syllabus. They were the pre-2023 syllabus. After the 2023 update, there were new types of questions. So you're going to see that 2023 onwards, the papers are sort of having a similar pattern. And that is the reason why I do not recommend doing past papers at this point, coming to the exact same point. So right now, we do not have a lot of papers. So the students who might be doing papers, they might go on till like, let's say 2015 to 2025. They might be like, oh, hum 10 saal ke. This is absolutely a shit sort of a technique. You just need to do 3 to 5 years of past paper to get that A star or a distinction. Ideally, if you can do 5, that's the max I would recommend, and the minimum I would recommend is aap 3 saal ke karo. You should do 3 to 5 years worth of past papers, and if your concepts are strong and you have done enough topicals, I can assure you, even if you do 3 years of past papers, you can easy peasy तरीके से A star ले सकते हैं. Easily. I am telling you, IGCSE, GSE, both same to same. But एक और point भी है, a lot of students usually say that IGCSE is different for and O levels are different. Yeah, they are different, but then for some subjects they're identical. So your computer science for O levels and your computer science for IGCSE, they are 100% same. Their syllabus is same. If you open up an exact paper, all of the 3 variants are same. So yeah, if you open up an exact paper from IGCSE, let's say you open up May, June 2024, paper number 12. That's the exact same as O levels paper number 12 for May June 2024. So आपके पेपर भी सेम आएंगे. So एक तो ये बात ज़हन से निकाल दो कि सर मेरा O level GCSE है, इसका IGCSE है. It's the same thing. सही है. So नो अब देखो, अभी आपने ये लिस्ट पे जंप नहीं करने. आपने पहले इंश्योर करना है कि यू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स. जब आप ये 2 तरीके अच्छे से करोगे ना, योर कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग डन, योर टॉपिकल्स आर बीइंग डन, यू नो द बेनिफिट इज दैट यू विल ऑलरेडी गेट अ हेड स्टार्ट. यू गोना गेट टू अ वेरी गुड पॉइंट. बस एट दैट पॉइंट, वंस यू गेट टू दिस place where you have that head start, you would be able to get a good grade. नहीं, October, November is not difficult at all. It's not difficult at all. बिल्कुल inshallah, Aima, you can definitely get a distinction. I'm telling you, easy तरीका है. Sir, can I do topics for paper 1? बिल्कुल, of course you can do. If you can manage, I would recommend एक दिन paper 1 का topical कर लो, एक दिन paper 2 का कर लो. And now, one other tip would be, if you can, and if it's possible somehow in your schedule, if you can basically sort of cover paper 1 as one subject and paper 2 as a different subject, that is even more efficient if you have less time and आप बहुत ही cooked हो. If you have some sort of preparation, फिर करने की जरूरत नहीं है. But now once you do these 2 things, आपको एक head start मिल जाएगा, आप एक बहुत अच्छे point पे आ जाएगी. You will sort of automatically be at that A category. So now rather than going from a D to an A star, imagine going from an A to an A star. What is more realistic? Going from a D to an A star or going from an A to A star? Definitely it has to be A from an A star, right?
So it's really easy that you first do topicals and concept, but this is the important point. Now, for those who have done their preparation, those who have been preparing for their mocks, students who are not absolutely quick, I'm going to come to all of those questions. आप tension ना लो, सब कर लेंगे. D2 distinction, if you lock in, if you follow the formula which I mentioned up here, this is the formula. If you follow this formula, क्यों नहीं आ सकती भाई? किसने बोला नहीं आ सकती? 100% आ सकती. Only if you follow this formula. सही है. Managing the subjects routine, I have set a very long VM, वो मैं आपको फिर से भेज देता हूँ और उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं. सही है. पहले मैं ये बता दूं कि if you are some sort of not co, so for those who on a scale of 1 to 10 rated their score to be 6, 5 or above, this means you are good with concepts, you know some sort of concepts, you might have done a bit of topicals, maybe आप लोग mock देने जाए and you get like a B. सही है. And if you get a B, it's not like आप जाके concept पे सीखोगे. You just need to see आपके concepts weak कौन से. For those who are lacking with a few concepts or are like at B or C level, you need to identify what topics are weak. सही है. So if some student of mine is preparing and he's losing marks, you're going to see that every time he does a paper, he's going to lose marks in one topic. So like for me, let's say I hate chapter 3. So whether it's teaching or learning, either way, I hate chapter 3 a lot. So when I do a paper, I lose marks in chapter 3. So now a lot of students, when they lose marks, they're like, okay, marking scheme dekh liya, kar liya, ho gaya, good and go, bas agle din agla paper dunga. No. If you consecutively identify a pattern within your past papers, you let's say are done with your mocks, you open up your mock result, you see, oh, yeah, I lost all my marks in chapter 3. Then you do a practice paper just to see कि यार उधर क्या मसला हो रहा है. You do a practice session, you again see कि chapter 3 में marks कट रहे हैं. Then this is the plan. You need to basically go back from your past papers and you need to first of all understand that concept which you're lacking with. So like you see that, oh, my chapter number 3 is weak. So you go back to the revision part. You revise that specific part which you feel like is weak. Then you do the topicals for that. And then you get to past papers. You know, you all are sort of missing one important point. People will, these students are like, sir, मेरे topicals बहुत कर लिया, I haven't done some past papers, अब मैं क्या करूँगा? Am I cooked? No. एक बात तो बताओ जरा. These topicals, aren't they from your past papers? Past papers, except for the fact that they help you with time management and sort of a bit of exam fear को overcome करना. उसके बगैर, it's just topicals, but one question from each of the topic. सही है. So the moment you start doing topicals, आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि भाई you have started preparing for your past papers. But once you start past papers, आपको एक benefit ये होगा कि by the start of April, now ideally for those who have some sort of preparation, then I would recommend April के start off with past papers. सही है. Exactly, वही Iman, coming to that point. सही है. If you start off with your ELEs by 1st April or by 5th April, you're good to go. You have entire one whole month. 1 month is more than enough for past papers. 1 whole month. In that 1 month, once you open up a paper, अब आपने करना कैसे? Time to share how to start and solve a past paper. आपने ELE खोला, pen पकड़ा, बिस्मिल्लाह किया. You started off with a question. आपने एक question किया. Okay, you do not get it. You do not get a question. खाली नहीं छोड़ना. खाली नहीं छोड़ना. सही है. There's a question, let's say I open up this question, ये मैंने आप लोग के साथ ये questions करने थे, but चलो नहीं हुआ, that's a different story. But let's say you get this question. And the question is, the following pseudocode algorithm uses a count control loop to read in 10 names and store them in an array with the name of names. And then you need to basically this loop being implemented and you need to rewrite it, right? You need to rewrite it. अब आपको नहीं आता. Some students are like, okay, मैं छोड़ देता हूँ. आपने छोड़ना नहीं है. Whenever you're doing a topical or past paper, for either of them, try to write whatever comes into your mind. जो आपके ज़हन में आता है, just write an answer. And then later on go on to the topical marking scheme and see कि marking scheme क्या बोलना चाह रहा है. Then once you, let's say you find a very difficult sort of a question, you see like, यार ये एक ऐसा question है, ये threshold गिराने वाला question है. होता है ना, we always say थ्रेशोल्ड गिराने वाला सवाल, भाई दिस इज अ थ्रेशोल्ड ड्रॉपिंग. यार वो सवाल आया था ना, वो सबने गलत किया होगा. तो इफ यू सी दैट अ क्वेश्चन कम्स अप इन योर एग्जाम व्हिच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, व्हाट डू यू नीड टू डू? खाली नहीं बैठना. मार्किंग स्कीम देख ली, यू माइट बी लाइक, ओ यार ये आंसर है, ओके गुड टू गो. नो, आफ्टर दैट
after doing some no, MS कभी simultaneously नहीं करनी. You complete the entire paper. आप start off करते हैं, आप first question से लेकर question number 10 तक जाते हैं. You complete the whole question set and then at the end you check it. सही है, खुद सब के सब करे, बिल्कुल सारा का सारा खुद करना है, सारा करो. कोई क्वेश्चन नहीं आता, try doing it on your own. Don't leave it empty. Try doing it on your own. जिस तरीके से भी होता है, try to give it your own input. Even for topicals, yeah, even for topicals. That's the mistake, Iman. That is why you do not feel confident. That is why you are sort of messing upon those past papers. And that's the reason why you want to go to those past papers. आप टॉपिकल करते हो, कहते हैं यार ये तो मुझे नहीं आता. बट फॉर टॉपिकल्स आप पता है एक काम करो, टॉपिकल्स का आप एक काम करो, टॉपिकल्स में आप 2 सवाल करो एंड फिर आप मार्किंग स्कीम चेक करो. या फिर इवन फॉर टॉपिकल्स का थोड़ा सा सीन ये, क्योंकि इट्स फॉर योर ओन लर्निंग. इवन इफ यू डू वन होल क्वेश्चन, आप उसके बाद मार्किंग स्कीम करते हो, वो सही है. बट ये नहीं करना कि आपने 7 मार्किंग स्कीम खोली हुई है एंड देन यू लाइक ओके क्वेश्चन 1 सेज let's say what does encryption mean, and you're like encryption यार it was some sort of पता नहीं कोई उसको कोई hacking related चीज है. And then you're like, oh, marking scheme, oh, it's basically this concept. ये बिल्कुल नहीं करना. आपने ये करना है, आपने देख लिया what is an encryption, आपके ज़हन में जो आता है, you think नहीं आता कुछ, write something, it's related to let's say hacking. अब आपने गलत कर लिया, कोई नहीं, but now you look up onto the marking scheme. आपने अब उधर भी नहीं देखना. Basically आपने क्या करना है, आपने वो कर लिया, okay, hacking कोई नहीं, you move on to part B. आप part B solve करो, then part C solve करो. Question complete हो गया. जब पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है, then look on to the marking scheme. Then give yourself marks out of whatever that question. So let's say it's a 7-mark question. Then आपने सारे के सारे mark करके you're like, okay, I got 5 out of 7. And then the point which you got wrong, अब उसको अच्छे से ज़हन में बिठाओ. I would advise the point which you got wrong. Let's say I wrote something incorrect up here, and now I looked up onto the marking scheme. I get the right point. अब मैं छोड़ूंगा नहीं. I'm going to write the right point above it. So I might write the correct point up here. Yeah, it is basically this concept. Say, and उसको लिखने से it's going to help you get the concept in the right way. मुझे जरा पानी पीने दो, क्योंकि yes. Okay. कोई नहीं अजीज़े, you can easily cover up those topics. कोई मसले की बात नहीं है. Amar is saying, sir, should we highlight keywords in our answers? No, you are not required to highlight. You are not required to do anything out of the scope of what's being asked. मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी. If a question does not ask you to declare something, if the question mentions, एक question यहाँ पे मैंने कराना था, it says you do not need to declare any arrays or variables for this algorithm. सही है. If a question says that you are not required to declare any arrays or variables, especially in the 15 marker, a lot of the students are like, sir, अगर हम कर ले just because our teacher was like, or just because we want to be on the safer end, ये कैसा रहेगा? Why, when an examiner states that it's not required, why are you sort of doing something? So if the examiner has the examiner anywhere stated कि भाई आपने keywords को highlight करना है, have they ever? No, right? They haven't. Because they haven't, the keywords are not required to be separately highlighted कि आप उसके इर्द-गिर्द box बना दे, आप उसको थोड़ा सा bold लिख दे. No, just write proper statements which can get you proper marks. सही है. Then the second question was, Abdullah said, sir, ये loops type समझ नहीं आते. कोई नहीं, Abdullah Sayyed, आप मेरे YouTube channel पे जाओ. In that chapter number 7 की playlist देखो. Chapter number 7 की playlist के अंदर I have, I guess, 2 videos uploaded. For loop, while loop, repeat until. सारा इतने detail में explained है. You just watch that and फिर इंशाल्लाह easily हर question हलवे की तरह बहुत easily हो जाएगा. आपने बिल्कुल मसला नहीं, कोई मसले की बात नहीं है. Sir, how to go through the MS correctly? A very good question, Anas. A very, very good question. But before that, Uzafir, right? Yeah, he's saying that, sir, what are the major concepts to focus on? All the paper number 2, chapter number 7 and 8 के concepts जब combine होते हैं, so when you join chapter 7 with chapter number 8 and you want a question that tests everything in those 2 topics, you have a 15 marker. So strong focus on chapter 7 and 8. Right now in our live classes, we are doing chapter 8.
So इसीलिए we are keeping it very slow. Our classes are really very slow paced. It's with the name of Code Catalyst. मैं link भी share कर देता हूँ. You can also share it with your friends. Subscribe भी कर देना, अच्छी बात है. And we also have an Instagram page. I'm not sure it's with the same name, Code Catalyst. So we do share a lot of useful tips and tricks, reads and all that stuff. तो आपको अच्छे से वहाँ से समझ आ जाएगा. सही है. So now the question which let's say बारी-बारी जाते हैं, अब बारी-बारी सबके क्वेश्चंस करते हैं. But before moving on, I want you all to firstly let me know, आप लोग को ये समझ आई है कि अगर आपको को तो आपने क्या करना है, and if you are let's say somewhat good, आपको क्या करना है. पास पेपर टॉपिकल्स की बात समझ आई है. जल्दी मुझे चैट बॉक्स के अंदर सबका yes या no स्पैम होते हुए नजर आना चाहिए. If there is anyone जिसको समझ नहीं आ रही तो मुझे बताओ so that I can re-explain it. सही है. Okay, perfect. Now let's move on to some questions जो आप लोग काफी अच्छे सवाल पूछ रहे हो. Let's address them. First and foremost thing, a very good question asked by Anas: how to go through the MS correctly? This is a really important skill. Marking scheme लोगों को नहीं आती पढ़नी. सही है. That's a big problem. I agree. अब marking scheme पढ़नी कैसे? Let me open up some exam paper. So let's open up this paper from summer 25. Let me share the screen. This is a really important point. Really important point. And ये बारी-बारी अब मैं सबके questions address करूँगा. But yeah, I hope you all would be able to see the screen now. Right? Yeah. So you see in front of you, we have currently the summer 2025, May June 25, paper 11. अब आपने ये paper करना है. You need to open up your booklet. You need to solve the entire paper on your own. Then you need to open up the marking scheme. First and foremost, before starting on, आप ये generic marking principles पढ़ो. These are the principles which the examiner use. सही है. आपने ये पढ़ना है. This is gonna help you understand कि examiner कैसे marks देंगे. अब generally ये marks तो sort of pretty much very general है. But still, at the same point, for some subjects, there are sort of extra points. सही है. But now, let's say you move on. Gonna see कि आप यहाँ पे आ जाते हैं. Now, the point is, how do you mark it? First of all, अगर कोई MCQ आता है, कोई numerical आता है, it has a straight one-word answer. It either has to be D, it has to be 2048, it has to be sort of something else, or whatsoever. आपने उसके नाम directly लिख देने, and you're gonna get a mark for it. Say you're gonna get a mark for it. Then question comes like descriptive question. अब descriptive questions के कैसे करने? For descriptive questions, Abira, that's a pretty good question. इसके ऊपर भी मैं आता हूँ. Say, let's say अब descriptive questions आगे, it might be saying let's blah, 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 blah. Okay, this question ideally I haven't seen the paper, but it is sort of just saying कि why should one go for compression? Benefit of compression. ये most probably benefit of compression का सवाल होगा. So अगर ये benefit of compression का सवाल है, so benefit of compression का सवाल में आपने कितने points लिखे? That's the first question. So if I open up the paper, if I open up this year's paper, रुको मैं exam paper open करूँ. While doing a paper, it's really important. Oh, गलत paper look. Yeah, just give me a minute. So, oh भाई खुल जा. Last year सबको 15 by 15 इसलिए मिले थे because there was a problem with the exam paper due to which it got cancelled. That is why everyone got 15. Otherwise इस वजह से कोई वो बात नहीं होती. सही है. No, CS के अंदर आपके A1, C1, B1 नहीं होते. That is for mathematics. सही है. No, you do not need to write all this stuff. So the principles basically, these marking scheme principles are just generic. They say कि भाई आपने positively marking करनी है, कोई whole number में करने, आधे number नहीं दे सकते. You basically need to award marks for any correct reason. अब ये देखो, as defined in the marking scheme. Now a lot of you might have this one question, but again this is really important. People usually say कि यार, if I write something correct and it's not in the marking scheme, तो क्या मुझे marks मिलेंगे? By marking scheme ने आपने बोल दिया, marks are awarded for correct valid reasons as defined in the marking scheme. However, credit is given for valid answers which go beyond the scope of the syllabus and mark schemes, referring to your team leader as appropriate. What do I mean by this? Let's say a question speaks upon something and I answer it in a way where I include something जो कि A levels के. So आप क्या मुझे marks कटेंगे? No, नहीं कटेंगे. कोई मसले की बात नहीं. सही है. So किसके अंदर नहीं मसला ये नहीं था. मसला ये था कि बेसिकली आपके जो लास्ट ईयर का 15 मार्कर था, it had 3 parameters inside it as
द क्वेश्चन, सही है। तो आपके फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स कभी नहीं हो सकते, इसके अंदर 2 ही हो सकते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर 3 पैरामीटर्स थे, दैट क्वेश्चन वाज एक्सक्लूडेड, सही। बस इतनी सी बात थी एंड उसकी वजह से काफी लोगों के वो गलत हुए थे। नाउ द पॉइंट इज, आप लोग ने इस पॉइंट के साथ गलत नहीं किया। सुनो, जब आपके मार्किंग स्कीम बनती है ना, यू नो हाउ इज द मार्किंग स्कीम क्रिएटेड? So if I'm a teacher, this isn't like marking scheme is created before the exam paper. It's sort of they combine all the papers, then they review the students' answers. So let's say Hamza said that ये एक question है, okay, and why is the reason? एक second, Hamza, it's basically the syllabus specifies कि आपके पास 2 से ज्यादा पैरामीटर्स नहीं हो सकते इन फंक्शन एज पर द ओ लेवल सिलेबस। हो सकते हैं बट एज पर ओ लेवल आपके 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट वो क्वेश्चन 3 का आ गया, तो सो दैट इज व्हाई इट वाज रॉन्ग, सही, दैट वाज द रीजन। तो नाउ द थिंग इज, आपकी मार्किंग स्कीम इज बेसिकली मेड इन अ वे वेयर व्हाट हैपेंस इज कि वो आपको बोलते हैं कि भाई हम एक टीम है, सही है, अब कोई नहीं क्वेश्चन और क्वेश्चन नहीं भेजे गाइस, बस और क्वेश्चन नहीं भेजे, चुप, अब सिर्फ सुनो। आप होता क्या, वो सारे बैठते हैं, they basically look upon your answers and then they see okay, this person wrote this point, ये मार्किंग स्कीम में होना चाहिए, this person wrote this, ये मार्किंग स्कीम में होना चाहिए, ये भी मार्किंग स्कीम का पॉइंट, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। So they sort of combine all the possible answers. So if your answer while marking your papers is not in the marking scheme, so you do not need to go with this point for valid answer. पता है क्यों? क्योंकि भाई एग्जामिनर ने जो मार्किंग स्कीम बनाई है, they included all possible answers which in most cases would be correct unless you want to add something जो कि बिल्कुल syllabus से बाहर है। So like let's say if a question comes up that why should I become, और compression तो नहीं बोल सकते, if let's say there is an AS level concept and an AS level concept that teaches you something related to computers internal circuitry, and now a question comes up why you might be making use of RAM. So RAM के अंदर in O levels you might not have studied the internal circuitry, right? But you take that A level point and you write that up here. अब वो point कभी marking scheme में mention नहीं होगा. You know why? क्योंकि that point is not from your syllabus. So any point that's not from your syllabus won't be in the marking scheme. But if you write something like that which is out of the scope of syllabus, marks मिलेंगे. But if you write something from your own and you're writing something in a way कि आपको लग रहा हो ये सही है and आपको marks मिल जाने चाहिए, but you won't be getting marks क्योंकि आपको लग रहा है ये सही है, but if the examiner did not include a point in the marking scheme, तो भाई आप उसको कट ही करो. Try to ensure that your points are as similar to marking scheme. Try to ensure that you do not go with something कि आपको लग रहा हो कि आप सही हो. There is a great possibility आपको लग रहा होता है आप सही हैं but आप गलत हैं. Students usually write very vague sort of answers. By vague I mean that अगर आपको question आए कि यार आपने इसके ऊपर बात करनी, you are like okay, आपने point लिखा है but that point, what's the wording? Yeah, the wording वाली बात, the wording is a good point. The wording is not compulsory to be same. Your wording can be different from the wording of the examiner, but there are a few words which we call as keywords. Those keywords should be similar. Like for instance, if I look up at this point, so you see, we see that one point is less bandwidth required to transmit the file, or it says less storage space needed to store the file. अब आप लोगों में से कोई ये नहीं करेंगे कि एग्जाम पेपर के ऊपर आप ये लिख दे that it takes less now less memory is fine, right? But if you say that if someone like writes one point that it fills the hard drive with useless data, अगर आप लोगों में से कोई ये point लिखते useless data, now that's a vague answer, you know. Examiner did not ask you to basically specifically tell us कि आपने vague answer दें या whatsoever. Yes, several of you have question, आप भेज दो नीचे chat box में, सही है. The examiner asks you to be very specific, and to learn how to be specific आपने क्या करना है, because you have a whole month. एक महीने में आप लोगों ने जाके कोई खाना बनाना नहीं सीखना, आपने जाके कोई बर्तन धोना नहीं सीखना, आपने इस्त्री करना नहीं सीखना. आपने क्या सीखना है, आपने ये सीखना है कि भाई एग्जामिनर को मैं क्या दूंगा तो वो मुझे ग्रेड देगा. And the foremost important thing is that your answer should be as similar to that of marking scheme. अब it's not 1D arrays का, I guess it's pretty difficult कि आज 1D arrays का हो सके, but I'm gonna try. Let's see, सही है, वरना शायद 12 से 1 चला जाए. But there is no priority list, as he say, no priority list at all. Each of them are equally important, सही है. So आपने first of all marking scheme में ये करना है, you open up the exam paper, and exam paper के अंदर आपने basically check करना है कि उस exam question के marks कितने हैं.
So like look up here, this question is of 1 mark. So if a question is of 1 mark, this basically means that you need to only write 1 point. If the question is of 2 marks, this means 2 statements. If the question is of 3 marks, 3 statements. If the question is of 4 marks, 4 points. 1 mark a question and you're writing 3 lines on it, that's absolutely wrong. If a question is of 1 marks, तो अगर आपकी marking scheme में ये 4 points है, so you are required to write any one of it. So अब आपने let's say कोई point लिख दिया, now you need to check it. Okay, is my point this? Is it this? Is it this? Is it this? अगर सही है, tick. नहीं सही, तो आपने ये चारों points को देखना है. And अगर let's say आपका सही भी है, now this is a tip which is going to get you that A star. Timing पे आता हो, नुखबा, kindly remind me. ये this is a really good question. इसके बाद मैं address करता हूँ timing का से. So the thing is, कि sir, if you write 2 points and 1 is wrong, will we get the marks? No. If you write 2 points and the question, actually, this is a pretty good question. Now, if a question comes up and they say that you need to basically write 2 points inside it, and in those 2 pointers, you need to basically, let's say a question comes up and that question says कि यार आपने 2 points नहीं लिखने, आपने सिर्फ 1 point लिखना है, just 1 point. So if there is a question that specifically asks you to only write 1 point, अगर उस case में आप 2 points mention करते हैं, so remember, only your first point is going to be counted correctly. So even if your first point is incorrect, दूसरा correct है, examiner first point को ही mark करेगा, वो दूसरे को ignore करेगा. This is the case where the question clearly mentions कि भाई you need to only write 1 point. जैसे होते नहीं है compression के सवाल, give 2 reasons why SSD might be preferred over hard disk. Now the question clearly mentioned 2 points. So अगर आप 3 लिखोगे तो आपके पहले 2 valid होंगे, तीसरे के marks आपको नहीं मिलेंगे. But now there is a case where they do not clearly mention कि आपने कितने points लिखने. Let's say a question comes up and they're like, okay, explain how does a sensor work in this specific security situation, right? So it's a case, they give you some example and you need to explain it using that ADC wali kahani from chapter number 3. Now, you know, if you open up the marking scheme for that paper, you're going to see uske 7-8 point hai, but the question is of 6 or 5 marks. बिल्कुल ऑर्डर एजुकेशन वाली बुक अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, डेफिनेटली रिकमेंडेड. आई स्टडीड फ्रॉम देयर ऑन माय ओन टू. सही है. सो अब क्या करना है, अगर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर वो नहीं बताते, दे डू नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स यू शुड बी राइटिंग and the question is of 6 marks, in that case using my strategy, using what I recommend to all my students is कि अगर question में नहीं clearly mention कि कितने points enter करने, तो फिर आप अगर 5 एंटर करें and you know the 6 point, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप 6 पॉइंट्स लिखो, क्योंकि आपका एक गलत हो सकता है तो वो उसमें cater out हो जाए. बट दिस ओनली वर्क्स अगर क्वेश्चन में ना मेंशन. So if a question comes up upon describe the working or working thing, yeah, describe how does a hard disk work. So if a question like this comes up, so it does not ask you or it does not specify कि आपने 4 points ही लिखने. So it does not say कि give 4 reasons. So in a case like this, आप 5 points. Exactly. Point equal to mark. A correct valid point is equal to 1 mark. So for every correct statement which you write, you're going to get 1 mark. And once you start marking, आपने इस तरीके से 1 by 1 for every correct statement आपने अपने आप को 1 mark देना है. जहां पे गलत हो सीखो. साइड पे किसी नोटबुक पे लिखना है, मेमोरी में वैसे ही याद करना है, whatever technique you might want to make use of, आप याद करो. सही आ गया फिर भी इन पॉइंट्स को पढ़ो. Maybe you only know the bandwidth point, लेकिन अब आपके ज़हन में ओ यार स्टोरेज वाली बात भी है, ओ ये पॉइंट भी वैलिड है कि यार ईमेल फाइल साइज या लेस डेटा, all of this. So it's going to help you understand the concepts really well. इसलिए really important कि मार्किंग स्कीम को आप side by side सीखो. And if there is something which you basically do not understand and it's a bit confusing, read the examiner report. So Huzafa is saying, sir, if we have done whole syllabus and concept is pretty much clear, then we should jump down. Yeah, in that case, if you feel like your syllabus is clear and you have done the whole contents pretty well, jump to past papers. And just the way you said, if you find difficulty, you do 1-2 papers, 1-2 papers, and or maybe 3 papers. And after every 3 papers, one strategy which I implemented during my A levels was that for every 3 sets of papers, जब मैं paper करता था, I used to maintain an Excel sheet, and in that I used to write what marks I get in it. And then I'm like, okay, what's the threshold? What grade I got inside it? And then I used to write the topics which I used to get wrong. So maybe I got hardware wrong. Hardware में 3.2 गलत हुआ. Malware मुझे नहीं आता, ये नहीं आता. Then I'm going to see that over consistently 3 papers, if I'm again and again getting and losing marks in the same topic, this is a clear indicator that, bro, that topic of yours this week.
and if that topic of yours is weak, तो फिर आपको उसके ऊपर. I got I had straight A's in my A levels. I had 4 A's in my AS level, and then in my A2 I had to basically spend a lot of time over SAT and these uni applications. So I pretty much started preparing for my A levels very late. क्योंकि आप किसी से भी पूछ ले, A levels आखिरी time पे नहीं होती. But somehow alhamdulillah I still ended up with straight A's. Missed all those A stars from 3 and 4 marks. Sad कहानी, but yeah, no, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने इसी में बेहतरी रखी होगी. So सर P2 के टॉपिक ज्यादा करें, आप सबके टॉपिक्स करें. By 1st March आप टॉपिकल्स ही करते जाओ. Till 1st March आप टॉपिकल्स ही करते जाओ. So one question खिजर का आ रहा है. Sir, I had a question regarding trace tables. How many times should we ideally spend? अच्छा देखो, there is no exact amount of time which you need to spend, and same question goes for Azize. Now here's the strategy. सही है, let me reshare it back to the note taking app. आपने टाइम कितना लगाना है? So now you have 1 hour 45 minutes. Remember, आपके पास कितना टाइम है? You have 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes. For paper number 1, I am telling you, if you have prepared the right way, the paper can easily be done in 45 minutes. But आपने वो वाला हाँ नहीं बनना जो एग्जाम हॉल में जाता है and they are like, okay, पेपर मिल गया, अब मैंने नंबर बनाने में सबसे पहले निकलूंगा ताकि पूरे हॉल को नजर आ रहा हो कि यार ये बंदा तो कोई बहुत ही बड़ा लाइक बंदा है, ये है वो है मैं तो उठ के निकलूंगा पहले साल ताकि मेरे ओरा मैक्सिंग हो जाए. ओरा मैक्सिंग, आपको ओरा मैक्सिंग नहीं करनी. रिमेंबर, कभी भी ये मॉक एग्जाम में भी काफी लोग को ये होता है कीड़ा कि नो आई नीड टू लीव द हॉल अर्ली. पता है होता क्या, दे गो आउट, दे लाइक यार अहमद यार वो क्वेश्चन कैसा हुआ था तुम्हारा, मैं तो यार बहुत जल्दी करके आ गया. एंड अहमद इज लाइक आंसर 62 था. And he's like 62 था, मैं तो 60 करके आया. And then he realizes कि वो जो बाइनरी उसने लिखी थी उसमें 2 के अंदर उसने नीचे उसने 1 की जगह 0 लिख दिया. And अब अगर उसने वही घंटा जो वो बाहर निकला है उसकी जगह आके वो रिवीजन कर लेता तो उसकी बेहतरी ना होती. So remember, at this point, Heather, if your concepts, if you are right now, yes, you can do paper 2, paper 1. Perhaps another tip would be to treat IGCSE O level paper 1 to be a different subject and IGCSE O level paper 2 to be a different subject. If you count both of them separate subjects and you start preparing for now, easy A star, inshallah, easy peasy A star ho sakta hai. Now for paper number 1, you have 1 hour 45 minutes, which is very much like if I want to be sort of, मैं कोई शोखी मोखी नहीं मार रहा, but reality बता रहा हूँ. I prepared pretty well for my exam. And I was able to complete my paper number 1. Like जब मैं practice करता था, मेरा paper number 1 30 मिनट में हो जाता था. Say I had 1 hour 45 minutes में 30 minutes में कर लेता था. And I used to get good marks. Say so. अब सीन ये कि once you learn the concepts, once you do those topicals, once you get to know everything by just literally looking up a question where it says what is compression and you need to write one statement, do you think it's going to take 10 minutes? It's literally going to take 30 seconds or maybe even less. So you have a lot of time for your paper 1. So for all those who are worrying for paper 1 ke time management, don't worry at all. Start from the very first question, go till the aakhri question, whether it's question 10, question 11. If you don't get any question, if there is something difficult, you don't get it, skip that question, move on to the end. Once you cover up everything, come back to the question which you skipped and do as much of it as you can. So zaruri nahi hai ki aap usko sahi tarike se karo. Whatever you know, maybe aapko thoda sa us topic ke related kuch aata hai, आप जितना आपको आता है आप करो. एंड वर्किंग के यार, डू वी हैव टू शो वर्किंग फॉर नंबर सिस्टम्स अगेन, जो इस तरह स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ थोड़े क्वेश्चंस है ये आप में पूछना, बट या डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. Generally, if the question gave you the space for working, like usually होता है ना कि convert B7, which is a hexadecimal, into binary, and then you're going to see that there are like 3 to 4 lines niche for working. So in that case, the examiner expects you to basically show the working up here. But if it's like a direct question 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 and you need to tell the denary for it, so yeah, in that case it's not recommended. But if they give you space, make use of it. Please make use of it. So the examiner कोई चीज आपको दे रहे, they are giving it for your own benefit, right? So hexadecimal to binary, then binary to denary. Perfect. I also teach all the students the exact same strategy. इसका एक दूसरा तरीका भी है, but I also make use of the same plan. So, sir, you look, see, chalo. Now the next point is perhaps, Fasi, yes, you can get an A, but I would say P2 is really important. If you leave P2 entirely, then nahi aa sakta. Now the thing is, the only place where you're going to
feel a bit of problem with your time management is paper number 2. Paper number 2, just like before, 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes. A very good sort of time, 1 घंटा 45 मिनट. But at this point, अभी आपने time management की फिक्र नहीं करनी. Listen up, this is really important. No time management की concerns at this point. सही है? This whole month of March, this is your concept clarification, topicals and practice month. इस महीने में आप अगर पास पेपर कर रहे हैं, you're doing topicals, आप ना let's say 3 घंटे भी लगा रहे हैं ना, don't worry. Just try to learn everything. Try to ensure आपकी concept strong हो जाए. Past paper time management is going to be important once you start off your papers in April. April से लेकर आपके 15th मई तक जो आपकी एग्जाम टाइम है, उसके अंदर आपने वो सारा का सारा 1 महीने जो आपके पास होगा, तब आपने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करना है. एंड इंशाल्लाह 1 month is more than enough अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाए. But now how do we break this 1 hour 45 minutes? Now we all are well aware P2 is basically broken into 2 segments. First 60 marks and then we have the 15 marker wali bala. This basically tests your chapter 7, 8 and this tests your entire paper number 2. Time कैसे divide करना है? अब आपको पेपर के ऊपर लिखा होता है that for 15 marker you need to give 30 minutes. गलत बात है. 30 minutes तो barely आपको समझने में लगते हैं. सही है. My school only offered 8 subjects, जो कि मैं sort of regret कर रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे स्कूल करते नहीं थे. But I had 8 subjects O levels, 4 subjects A levels. I had 7 A stars, 1 A with the top in Pakistan distinction in IGCSEs and फिर A levels करके बता दिया. Now how do you divide it? So remember, जो आपके first 60 marks है ना, try to complete that in 45 to 50 minutes. And very much doable. Very, very much doable. Barely भाई आपके होते हैं 7 to 8 questions. Question 1 to let's say question 8 कर लो या even 9 कर लो. Easily 45-50 minutes में हो सकते हैं. आपने बस 50 मिनट के अंदर first 60 mark को खत्म करना है. सही है. And then you need to keep the remaining 55 to 1 hour for your 15 mark. Why 55 to 1 hour? Because 15 marker includes a specific strategy. Now, how do you jump and solve a 15 marker? That's the question jo abhi hum karenge. So 15 marker strategy number 1. Once you get to the question, dissect it. What do I mean by dissection? By dissection, I basically mean that firstly, आपको ये समझ आ गई कि घंटा आपके पास 15 marker के लिए होना चाहिए and 45 minutes plus 60 marker के लिए. अभी नहीं होगा, but if you do 1 month of consistent दिल से लगन के साथ topicals and you do enough practice and concept clear them, by easily हो जाएगा. I can assure you हो जाएगा. And for those who are taking or registered course at this point, inshallah, once you are done with the course content, आपके easily हो जाएगा. आपने टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है. सही है. फिर हमने घंटा देना है 15 मार्क. अब घंटे के अंदर हमने करना क्या? तो पानी पी लो कि मैंने ना पानी पीना है. Basically, I just came from a Shinwari, had one of the best ever कढ़ाई and उसके साथ काबली पुलाव, so वो जरा पानी पीना पड़ेगा. सही है. And we need to take it a bit slow. But no, let's go and see. Yes, comments are mandatory. Comments are mandatory. How do you do the 15 mark? First of all, that's great to know. First and foremost, when you open up a 15 marker, आपने dissect करना. What do I mean by dissection? So let me open up the notes. So maybe I'm not sure. I might not have the notes. Let me see. Notes तो नहीं होंगे मेरे पास. But if I open up a specific exam paper, so let's open it. Okay, we do have this paper जो कि share हो रहा है, right? This is being shared, right? अच्छा नहीं share हो रहा. So let me share this out. Let's say you get a 15 marker like this. क्या करना है? सबसे पहले read a question. Read the question. अब मैं ये solve नहीं करूँगा. I'm just gonna explain how do you solve it. आपने इसको पढ़ना है. You need to give it a whole read. Full detail में आपने start से लेकर ना end तक पढ़ लेना इसमें है क्या. Then you need to come up here. While reading it, आपने एक 2 चीजों का ख्याल रखना. You need to read it. Okay, there is a 2D array with this name. उसको highlight कर दो. All the important things needs to be highlighted. फिर दरमियान में you need to see कि यार there is something जिसके ऊपर ना basically
क्लियर कट नहीं लिखा है, लाइक ओके देयर इज अ 1D array, ओके फर्स्ट डायमेंशन, चलिए ये तो अलग बात है, मे बी आप इसको रीड कर रहे हो, यू गोना सी दैट यू माइट हैव वन प्लेस वेयर यू नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल, सो दे माइट सी, यू माइट सी दिस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपने इसको अंडरलाइन कर देना, व्हाई, बिकॉज दिस टेल्स अस कि आपने ये वेरिएबल बना दिया, देन एट द सेम टाइम आप इसको और रीड करते जाओगे, यू कैन सी दैट ओके देयर माइट बी वन अदर प्लेस जहां पे मुझे कोई वेरिएबल यूज करना है, सम अदर प्लेस दैट आई नीड टू यूज ऑफ दिस, एंड हम उन सबको हाईलाइट करोगे, एंड यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कम अप विद अ प्लान, आप करोगे क्या, यू नीड टू मेक अ डमी model. I'm going to create a video on this too, inshallah, for my Instagram page. You need to create a model, like let's say it's a 2D array. So I create this 2D array. I say that, okay, it stores in the first dimension, it stores the player number. So I can say, okay, player number. And then the second one stores random number. So I can say RN, random number. So this means if this is player 1, 2, 3, 4, and this might be like A or 7 or my 8 or 11 and whatsoever. But I'm going to visualize it. So whenever you have a 15 marker, before solving it, dissect the problem, break the problem into sections. Okay, ये पहले मुझे ये करने को बोला, मुझे कहाँ से पता लगेगा ये लिखा हुआ है. You need to do all this. आप इसको पढ़ोगे, based upon this you need to create a model कि यार मैंने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, and alongside that आप अपने सारे arrays को इस तरह visualize करो. You make a diagram and then you're like, oh, this is pretty much very easy. If I'm trying to access number column, this one, so मैं कैसे करूँगा? If I let's say want to find the position of this, so I just need to write the name of array. So this is going to be number. Okay, पता नहीं मेरा थोड़ा सा graphic tablet आज lag कर रहा है for some reason. Number generated, and then within the brackets, क्या? This needs to be the row. So what's the row? Row is basically this. If let's say this is position 1, this is 2. This is row number 2. And what's the column? It's let's say column number 1. And boom, if you declared it in a way where this is the first one is number 1 and this is also number 1 and not 0, तो आप उसको इस तरीके से करोगे, and this one is basically allowing you to access numbers. So अब ये complex कब होता है आपके 15 markers? When you basically need to make use of a loop. So like अगर आपने इसी के अंदर loop करना है to go for all from let's say there are 10 numbers of is what do we call it numbers, and you need to go and find कि हर एक के random number क्या, तो आप किस तरह करोगे? You need to basically say for count, and let's say your count needs to go from 1 to number ka count, whatever the number count was. So let's say you are not aware, but let's say there's somewhere mentioned that there is a variable with the name of number count that stores how many numbers are present. You need to go on a loop, and then for each of those loop, what you need to do, you're like, okay, output, and you need to output the, let's say arrays, the random number position, right? So aap kya karoge, you need to write output number generated, number, let's say for short form it's numg, and this followed by, I need to find, basically I need to only output this, right? I need to output this part only. So for this basically means I need to keep my rows to be sort of changing, क्योंकि मैंने हर एक की बारी बारी देख रहा है. I need to first print this, then I need to do this. So like my rows should be changing. So I'm going to write count up here to indicate कि count number 1, count number 2, 3, and then comma में मैंने specify कर देना that I only need to stay in column number 2. Column number 2, and boom. Now this is how you basically break the whole problem. आप इस तरह थोड़ा visualize करो, take a pencil with yourself, break that whole. So like the first 10 to 15 minutes coding नहीं करनी. 15 minutes आपने इस तरह बस 10 minutes, ideally 10 to 15 minutes आपने बैठ के बस इस तरह मॉडल बनाते रहना है. You need to create models, you need to explain everything, you need to basically tell कि okay यार हमने ये करना है. ये जब हो जाएगा भाई, आपके पास एक स्केच बन जाएगा. ओ भाई, दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, हमने पहले वो करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. बिकॉज आपने सब विजुअलाइज किया होगा, आपको ये मसला नहीं होगा कि यार शुड इट बी num2 count or should it be num count 2. This is a very common question. People are unable to judge कि यार पहले वाले में वेरिएबल होगा, दूसरे वाले में. भाई जब आप इस तरह विजुअलाइज करोगे ना, when you make these diagrams, it's automatically going to solve that problem for you. Automatically आपको पता लग जाएगा कि you need to do it this way. It's not that difficult. इस तरीके से जब आप करोगे, you're going to see that it's really, really, really easy. So 15 markers के लिए really important. Spend the first 10 to 15 minutes. First 10 to 15 minutes on exploring the question. Explore the question. Try to come up with क्या हो रहा है. Back when I was giving the paper, I was the first candidate from Pakistan to appear in sort of like the batch which for the first time appeared in the 2023 syllabus. Sahi hai? Is it better to make a rough sketch on the question solution or on the blank page?
It's up to you, blank page को make use करते हो, और even if you want to make it up here, ये सारी जगह जो है ना ये आपके पास है, make it with a pencil दो, सही है, पेंसिल के साथ ये है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोडिंग करनी, इससे ऊपर आप जहाँ पे भी करते हो, I used to do it with a pencil, सही है. When you get a distant result, oh definitely, of course, when you're applying to the universities, you ask you for your honors, right? They ask you for what you have achieved, your achievements. So within your achievements, you can mention this distinction. So that is sort of a big honor. It's sort of saying that if I got a top in Pakistan distinction, it's sort of similar to saying, yeah, in my entire batch of students who were appearing in, what do we call it? This, क्या कहते हैं? Computer science examination, I was the one who scored the greatest, right? Do unis ask for mock results? अच्छा भाई, जितने आपकी universities हैं, they mostly focus upon your final results. Now, the universities which are based in the US, yes, US universities, they do ask for mock results, but at the end, if it's good, well and good, when mostly across the entire globe, the main focus is upon your final A-levels. So all the universities, even if you got like C's and D's in your mocks, especially if you're talking about Pakistan explicitly, Pakistan ke andar, it's all about final grades. Your mocks have zero value, like literally zero values. Then if you go towards China and maybe Hong Kong or Turkey, even for them, it's again only A-level final results, no mock result at all. For O-levels, what do we call it? For UK and all that stuff, it's again mostly final grades. For the US, yeah, US is the only place in the globe, alongside some other universities too, that do take mocks into consideration. But even for them, if you have sort of a C or a D in your mocks and then you get up an A star, it shows consistency and it does tell them, yaar, this person improved. That's also sometimes counted as a positive point. Sir, how's Roots IV for A-levels? It's a good school. We're going to have a special session for A-level students. जब आप लोग की exam हो जाए, with the schools का सब discuss करेंगे. By the way, I myself was from Roots. I was from Roots Millennium though. अच्छा किया ईमान, that was a good decision. I would recommend कि आप CS ही करो. ICT से better. If you want to do it that way, वो करो. Sir, do we need to initialize any array we make in the questions which are not mentioned? अब जहाँ पे array आपको declare करना पड़ेगा ना, guys, listen up. जहाँ पे आपको array declare करना पड़ेगा, that's a pretty good question. वहाँ पे clearly mention होगा, you need to declare an array. So if I look up at this 15 marker, यहाँ पे क्या लिखा? You do not need to declare. Declare. You do not. जब बोल दिया not तो नहीं करना. Assume it's already done. In all the previous questions, before the 15 marker, all these other questions, यहाँ पे wherever you want to make use of an array, unless they don't mention it themselves that you need to make use of declaration to declare an array, आपने नहीं करना. So the declaration part was only in the 15 marker. अभी वहां से भी हट गए क्योंकि वो खुद लिख देते हैं. And अभी अगर कहीं पे आपने declare करना है तो mostly question आपको specify करेगा. Otherwise, आपको usually, and also again, once you start practicing the marking schemes, once you sort of explain, so mark these questions on your own, you will automatically get to know कि भाई अच्छा, मैं तो वैसे ही टेंशन इतनी ले रहा था, ये तो यहाँ पे भी डिक्लेयर नहीं है, यहाँ भी डिक्लेयर नहीं है, यहाँ भी डिक्लेयर नहीं है, तो मतलब आपको खुद भी समझ आ जाएगी ओवर टाइम कि कहाँ पे डिक्लेयर करना है, कहाँ पे नहीं करना. Sir, does efficiency matter in code? No, that's another good point and another important point I want you all to address. For the paper number 1, I mentioned कि आपका code as आपके answer should be similar to the 50 to what the marking scheme has, right? That's not the story for your paper number 2. Paper number 2 में my code can be 100% different from your code, and our code, the two of us, our code would be different from the examiner's marking scheme. So now the thing is, you can sort of answer a question from multiple approaches. What if I made use of for loop, the marking scheme made use of while loop, whereas Hamza, you made use of repeat until. So क्या हमारे marks cutting? No. If your points are correct, you're gonna get marks. How do you get to know कि आपके points correct है या नहीं है? I made a reel for this on my Instagram page too. आप मेरा Instagram देख लो, उसके ऊपर काफी useful चीजें आपको मिलेंगी. But now if I open up a paper which is sort of a paper 2, just give me a minute, मैं कोई paper 2 खोलता हूँ. Up here, let's say we get this question. This is a pseudocode question. अब आपने ये तो देखना है, but at the same time, पता है the most important thing is this. You're getting marks for this. So while marking, आपने इसको इस तरीके से कर देना है कि you're gonna get 1 marks if you initialize it.
you need to basically make correct use of loop, you need to increment it, you need to rest of the algorithm needs to be correct. If all of these points are correct, फिर आपको marks मिलेंगे. So whenever you're marking it, आप इस तरीके से करें. And just like that, your 15 marker people are like, हमारे marks नहीं आएंगे, we're going to get 0. नहीं भाई. This is how your examiner marks your 15 marker. If you made use of some programming techniques which are appropriate, let's say there was a case जहाँ पे आपको सिर्फ values लेनी थी between 0 and 100, you make use of an if statement alongside a loop, आपको उसके marks मिलेंगे. अगर आपने कुछ extent तक भी question के related proper implementation की है, you will be getting at least 4 to 6 marks in AO2, and then you also get like, क्योंकि your 15 mark is divided into 2 parts. The 9 marks are basically for AO2, which basically means कि आपने कौन से programming techniques apply की. And then the remaining 6 marks are about how your code is good. Someone asked a question, comments compulsory. ये देखो भाई, the program has been fully commented. This means अगर आप comments नहीं लिखोगे, you are losing marks. अब comments लिखना कितना मुश्किल है. This means if you even sort of write incorrect sort of what do we call it? नहीं comments आपने हर जगह लिखनी होगी. सही है. So अगर आपके comments नहीं mentioned, you're going to lose marks. But if you do something and you explain it, आपको उसके marks मिलेंगे even if the code which you wrote was some sort of incorrect. आपको उसके marks मिलेंगे. Then another point is कि जो आपने variables बनाने हैं ना, let's say pass count, fail count, yeah, comments are only required for the 15 markers. Otherwise वो बोलेंगे. What are comments? Comments are basically sort of extra statements जो आप लिखते हैं. Like let's say I write a specific statement. I am writing some code. Let's say I am writing this one code. किधर गया? So I'm writing this set of code, and इसके अंदर you see I let's say wrote this part. लेकिन ऊपर I added these 2 slashes to explain यार what's happening. So I add these 2 forward slash, and then I'm like, okay, outputs the name of the competitor with the highest score. So now the examiner knows that the code which I wrote beneath this, it is basically the code which helps the computer to basically output the name of the competitor who has the highest score. So wherever within the 15 marker you are writing code, ऊपर उसके या उसके साइड पे जहां भी हो, try to add these comments. Except for those who are not understanding how to solve 15 markers, how to add these comments, यार जितना आप add कर सकते हो डालो. I would say there isn't any ideal number. If you're making use of some programming technique, you made use of a loop, you did some if statement, you outputted something, you took some input. अब हर जगह भी नहीं, but at least after every 4-5 lines एक comment डालते जाओ. Exactly, तो मैंने हमजा आपको यही समझाया कि आपके जो कोड है उसके अंदर आपने बेसिकली करना ही है कि it cannot be sort of very much 100% same, but one other way, one perhaps a very good technique would be कि आपकी examiner का जो कोड है ना, you copy that, you paste that in ChatGPT or whatever AI model, and you tell to it that this model, this is one way of answering a question, one way of answering a question. I tried attempting it this way. This is the question. आप question भी बता दो, and फिर बता दो using the same sort of logic which has not the same logic. Perhaps you say, check my code so that is it also performing the same task which the marking scheme code is performing. If the marking scheme code is similar to your code, आपको AI बता देगा कि yes, आप यहाँ similar है. If it's not, तो आपको AI बता देगा कि bro you lack at this point. So उधर आप देखो कि where are you lacking. So for the 15 marker ideal marking, you cannot mark 15 marker on your own. The main point here to let is कि आपको ये पता होना चाहिए कि your code should basically implement this. Your 15 marker should be making use of this. Your 15 marker should be having all this to get a perfect score. And then alongside this, ask AI to Pseudocode Pro. I guess मेरे पास कहीं पे I was making use of it, right? Yeah, I was making use of Pseudocode Pro. It is a good one, but it's sort of not very much compulsory. सही है. You can check the 15. No, you cannot check 15 markers because आपके जो Pseudocode Pro है. Now, if you look at the question paper mentions कि your arrays have been predefined. अब आपको नहीं पता arrays के अंदर क्या values है, variables के अंदर क्या values है. So क्योंकि आपके values उसमें नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा. सही है. Easy scene है. Exactly. अब क्योंकि इसके अंदर जो question में अभी आपको दिखाई, they have sort of pre-initialized the array, so you cannot check it using that case. Using that Pseudocode Pro वाला program. सही है. So yep, what are the blah 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 comments on the I guess काफी certain when is this class going to end? Uzair, if you want to watch the recording later on, आप देख लेना. So अभी आप टेंशन ना लो. से P2 के टॉपिक से मैं 15 मार्कर्स की प्रैक्टिस भी करें. बिल्कुल 15 मार्कर्स तब करना जब आपके सारा कुछ परफेक्ट हो जाए, उससे पहले हाथ नहीं लगाना. First try to make sure that the first 60 mark is perfectly done, and then you get to the 15 markers, and फिर आप उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. सही है.
Apart from that, one other point is कि if you're still unable to understand कि क्या करना है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही, so don't worry. अभी आप जितना समझ सकते हो करो. Try to get your concepts well. Inshallah, in the start of April, you're going to launch your past paper course. I myself will be solving those 15 markers for you. Or be explaining every bit of it. Why is the examiner doing this? Why are we doing like this? Isme kya hai? Is question ka matlab kya? Is point ka matlab kya? And inshallah, by analyzing those different lectures, you on your own would feel very, very comfortable, and you on your own would say, sir, kya baat hai? कितने जबरदस्त तरीके से करा दिया, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गई सर। आवाज आए थे एट द स्टार्ट 10:05 की तरफ। Sir, is there if then else if in the syllabus? Okay, this was another question. Sort of you guys are asking the exact same question जो कि मैंने अपने Instagram के ऊपर सारे अपलोड कर दिए। So मैं आप लोग को अपने Instagram दिखाता हूँ। So ये full catalyst का। So this is okay. So yeah, this is my Instagram page. See, we have sort of uploaded a lot of videos. Say, can you get an A star? Let's say. और क्या क्या चीजें हैं, the internet is a bit slow, I don't know for what reason, but yeah, okay, we do have a lot of other tips. So yeah, so how do you basically prepare for those definitions? Now this is the exact question which you just asked, Hamza. There is no else if statement in the official Cambridge P2 keyword list, but does that mean I cannot make use out of it? There's a technique to it. So yeah, there is no keyword like else if, but what you can basically do is कि आप इसको इस तरीके से जरूर कर सकते हैं कि there is nothing like else if, but आप इस तरह कर लो कि if you make use of an if statement, आप उसको इस knowledge के साथ कर दें. If something is true, do this. Else के बाद the way if we output something, we do like right else output this. So we generally do something like else output blah blah blah. So rather than doing that, आप इस तरह कर देना else. And then with this bit of a gap, you write else if something is blah, 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 then do this. So rather than joining else and if together, it's basically going to be कि आप थोड़ा सा gap उसके अंदर डाल दें. Yes, you, Abdullah, blah, blah, of course, inshallah. Our paper number 2 classes आप join in कर लो. अभी we are covering chapter 8 right now. आपको chapter 7 की recordings मिल जाएंगी, आप वो cover कर लो. Then आज तो basically मैंने आप लोग के लिए free session कर दिया है, वरना it was supposed to be a paper 2 topical practice session. Every weekend we solve past paper questions so that you all understand how to ace those exams. सही है, and आप वो सारे सही करोगे, so inshallah by 1st April आप papers के लिए ready होगी. आप मेरे साथ classes लो, by 1st April inshallah we're going to jump directly into papers and you will be very much good to go inshallah. चलो जी. The past paper session, that would be only for the registered students. The details would be shared later on inshallah in the group. I hope you all have joined in the group. सही है. वो 1D arrays, अच्छा 1D arrays यार करने हैं आप लोग ने, मर्जी है. Sir, what about skipping the lines and writing I did not get your point. Writing के बाद आपने क्या लिखा है? Skipping the lines. Sir, करें start. Sir, 1D arrays कल यार कल तो नहीं हो सकेगा. I'm cooked at this point. कल तो I'm gonna have my own class, so मुश्किल ही है. कल paper number 1 okay क्योंकि आप लोग के काफी बच्चों के mocks हैं, so I guess मेरे अपने भी एक student मैसेज आ गया है, so काफी messages आ रहे हैं. ओए काफी messages हैं. चलो crazy सी. Yeah, of course, all the details would be inshallah shared in the group. Past paper class के लिए भी सब कुछ, that past paper details have not yet been finalized. Inshallah वो 20th March की तरफ आएगा, post everything. I'm just sharing my Instagram and all those stuff. So if you have any other questions, आपको use वहाँ से कर लेना. But before ending it, I want your opinion on it. This last 2 hours 20-minute session which we hosted for you all today, was it helpful? Did it clarify your concepts? Are you now feeling a bit of motivated कि यार मैं कर सकता हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना, what's the exact strategy? So anything from your end so that I get to know okay, how it was helpful. So कुछ भी, anything from your end, let me know. Okay, sure. For example, if we have to skip line here and then write then, हाँ बिल्कुल आप क्या कहते हैं ये क्वेश्चन के सर स्किपिंग लाइंस का इतना मसला नहीं होता. सो लाइक इफ यू वांट टू डू इट लाइक दिस इफ एंड यहाँ पे जगह नहीं है तो आप आगे यहाँ पे लिख दो नो पास्ट पेपर सेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इट. That's so great to know, Zafa. Okay, so I hope it was helpful for all of you.
I guess I was supposed to do paper arrays के question, and I'm even willing to do it right now. है तो अभी भी घंटा बैठ जाओ, मुझे तो कोई मसला नहीं है. But because I know a lot of you would be having mocks का time है, so अभी अच्छे से सब लोग सो जाओ, नींद पूरी करें. Some other day, buddy, some other day. Don't worry, कर लेंगे इंशाल्लाह. सही है. Perfect. इंशाल्लाह हो जाएगा. Don't worry. अब कराना तो है पेपर 1D arrays का, but चलो, I'm planning on having some topical sessions with you all maybe once in a week, so do have a look for it. From, let's say, every Saturday, maybe 1 hour class, something of that sort, for free, open to all. So we can do something like that. Let's see. Yeah, we can do it some other day, but for now, the next class, कोई idea नहीं है. अभी तो ये है कि सिर्फ registered students will be, inshallah Uzafa, inshallah. जो अभी next classes हो रहे हैं from the weekdays, those are only for the registered kiddos. So exclusive sort of. But if you want to join in, you can of course join in. Let me know. You can message me on my WhatsApp number. I can share the details. आप वो form fill out कर देना, and our TA will get in touch with you, and then you will be given access to our portals and also added to their other group. Exactly, you can contact me. Sniper. आप WhatsApp के ऊपर मुझे message कर देना. I'm resharing all the social media platforms of ours if you want to connect through either of them. Here's our Instagram. We share a lot of useful stuff up here. Zarur karna. And I'm sharing my YouTube channel. We do have a lot of YouTube content uploaded, helpful content. The recording will also be present there. And then finally, I'm sharing the WhatsApp group link, which is supposedly the most important asset you should be having at this point. So there you go. Here are the 3 important links. Make use of them. And Abdullah Sayyed, we have only covered like chapter 7, so 8-9 classes हैं, सही है. And those 8-9 classes जो है वो आप जल्दी से उसकी recording देख लेना, and फिर आप chapter 8 पे live आ जाना, so इंशाल्लाह आपको सब clear हो जाए. If let's say while watching recordings you don't get anything, because students का होता है ना, इस तरह में live में समझ आती, recording में नहीं आती. If you don't get anything, I'm here to support you all, guys. I'm here to help you. If you don't get anything in my recordings or anything, सीधा मुझे मैसेज करो. सही है. Chapter number 8 has started. We are somewhat we have covered 1D arrays. Today was supposed to be the practice day for 1D arrays, but yeah, don't worry, sab good hoga. If you want to plan on joining in, you can watch the recordings. You don't get anything, we can have a different separate meeting scheduled up, but you can sort of cover it up at your own pace. जल्दी से हो जाएगा. Sir, do we need? Oh नहीं भाई, कोई different things. ये कैसे सवाल है? Do we need to use different? Bro, आपको एक और point बताऊं. Whether you write your paper with blue pen, red pen, black pen, yellow pen, green pen, at the end examiner के पास black and white जाता है. So examiner को ये पता भी नहीं लगता कि भाई आपने black से की है, blue से की है. What grades did you get in your mocks? So in my O3 mocks, I had 4 A stars, 1 A, and then in my CIEs I got 5 A stars. So I did have good grades in my mocks, but it's sort of a different case. It's not like कि मेरे grades वहाँ अच्छे थे तो इस वजह से मेरे CIs में, yeah, it did give me a good benefit कि मैं practice ज़्यादा कर चुका था when I started off early, but I can definitely assure. मेरा एक दोस्त था, उसका C था, C, सही है, C था उसका, and क्या कहते हैं mocks में he ended up with 3 A stars. मेरे पास कोई एक B और 2 C थे, I'm forgetting उसके mocks के क्या grade थे. He ended up with 3 A stars, सही है. So don't worry, easy scene रहेगा. Help you out in P1 as you didn't appear for it. Yeah, paper number 1 का ये था कि mocks definitely is just helping you revise the concept, right? That's the only benefit you get from mocks. I got an A in Urdu. A shocking element though, because a lot of people don't get A in Urdu, but that was a different story. किसी दिन गपशप session में करेंगे. Basically, Urdu के मजमून में या English, a lot of you would also be appearing in English, right? I'm not sure though कितने करें, but जो English के paper हैं उसमें except for summary questions, जितने ये ऐसे वाले questions हैं ना, इनके word limit is not sort of fixed. It's वो कहते हैं कि आपने 350 words तक लिखना है, but it's not compulsory कि आप 350 लिखो. If you write 400, 450, 500, आपके marks नहीं deduct होते, क्योंकि it's sort of आप extra लिख रहे हो from what an examiner needs. So examiner call such things as self-penalizing. सही है. So अब जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से 350 to 450 रहे, आप expand कर सकते हो. आप definitely जितना आगे जाना चाहते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो. I personally wrote it like sort of 1000 word के ऐसे, and I ended up with an A star. इसका मतलब मैं marks नहीं करते. अब मैंने उर्दू के पेपर में ये किया था कि I didn't know about this, so मैंने मजमून एक बहुत अच्छा लिखा, and then at the end I saw, oh यार ये तो 200 words का लिखना था, फिर मैंने cutting किया, and I knew I screwed up. So आप जब ऐसे लिख रहे होते अपने flow के साथ लिखो, बस time को manage करो English के लिए, उर्दू के लिए, because
someone had that question about English Urdu, तो आप अच्छे से बस time management सीखो and बाकी जितना आप अच्छा कर सकते हो करो इसके ऊपर, except for summary question या जहाँ पे बहुत required हो वो अलग केस है, लेकिन उसको छोड़ के आपने बिल्कुल इस तरीके से करें. Sir, how do you even have friends? Like, I'm a zombie. Okay, friends होना तो try to socialize as much as you can. सही है. Oh, अच्छा, I'm not sure summary का क्या scene है, but होती थी back at my time. Pakistan studies, understand the concept as a story समझने के बाद as much, and also you should learn how to address the marking scheme को देखो कितने points चाहिए. So like if you're studying the what do we call it, I was really good with history by the way, so if you're, let's say, doing that relation wala topic, Pakistan relationship with, let's say, some country like United Kingdom, so अब वो book के अंदर 10-12 points है. आपकी एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में लिखता है कि यू नीड 3 बेनिफिट्स एंड 3 ड्रॉबैक्स, तो बस आप 3 बेनिफिट्स याद कर लो विद रिलेशन विद यूनाइटेड किंगडम, 3 ड्रॉबैक्स. इस तरह आप अपने लिए पॉइंट्स बनाओ कि 3 पॉइंट्स बेनिफिट, 3 नेगेटिव फॉर ऑल द टॉपिक्स, उन्हीं याद कर लो, एंड देन द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू वुड बी. आई एम नॉट श्योर दो दे वर सपोज्ड टू हैपन दिस ईयर बाय द वे, these digital papers. Is IGCSE summary still included? Yeah, I'm sure IGCSE के अंदर तो summary हो गया. I guess he's talking about Urdu or maybe O level का क्या था. I personally gave 0500 IGCSE first language English. First language English was, oh damn man, that was a crazy difficult subject. I don't know bhai, pata nahi kaise. I know, acha, if you guys are talking about ESL, that's a different story, but I appeared in FLE, first language English, 0500, a very difficult subject. But again, you know, up now this is a story, a motivation part for all of you before ending the class. ESL is English second language, so IGCSE में offer होती है. The thing is, I was not that good with English. सही है, मेरा थोड़ा सा था कि I felt like English is a bit on the weaker end, and I feel like कि मेरा A star नहीं आएगा, शायद A आ जाए, B हो जाए, not sure though. But पता है फिर क्या हुआ? I gave it my best. I did as many papers as possible. मैंने इतने ज़्यादा टीचर्स से रिव्यू लिया, मैंने वर्ड सीखे, मैंने ये किया वो किया. I tried my best, and the way which I just told you, if you do the hard work, you pray, the luck element is going to come to you on your own, and eventually आपके आ जाएंगे. I ended up with an A star. If I got an A star in FLE, by getting an A star in CS, easy peasy, कोई मुश्किल बात है ही नहीं. Easy scene है, अच्छे से हो जाएगा. But yeah, बस ये scene है, and that's it. सही है. 2.5 freaking hours. जो मर्जी है दिगाव में बैठना है, पढ़ाई भी साथ साथ करनी चाहिए. And at the same time, this one other last word would be कि भाई पढ़ाई हर चीज होती है, but अपने नमाज और इन चीजों का ख्याल मस्त रखना. सही है. If you are just missing upon prayers क्योंकि आपका पेपर हो रहा है, तो आप तबाह हो. You don't need an A star in this life. You need an A star in this life, but you also need an A star at your final वाली transcript, right? जब the actual transcript. So नमाज वगैरह भी पढ़ते जाओ and all that stuff, and inshallah alongside that सब बहुत होगा. And don't worry, A levels के टाइम में A levels की बातें होंगी. A very good junior of mine always used to say तब के तब देखे जाएंगे. So हाँ, it is difficult, it's a big jump, but doable है. इतना नहीं होता. सही है. So बिल्कुल, of course, नहीं यार, if you do good work, if you give it your best and you ask Allah for help, हर जगह bless होता है, benefits होते हैं, and सब good रहेगा. But that's everything for today. I hope you all ace your exams and that you had a good learning experience. I don't know how much hours I sleep. LUMS is very competitive, very only 7 hours towards that, maybe like 5 hours, with some days being with a sleep of 4 hours, 6 hours ideally, maybe. But yeah, ये हिसाब है. And with that, let's end it up then. क्योंकि मैं सोऊंगा सहरी के बाद इंशाल्लाह. But yeah, that's it for today. Inshallah, see you guys next week. Good question. It's because they provide you with sort of a lot of opportunities. Acha, summer school ka yaar, I don't know. But yeah, I know only 3 days to nahi hai. It's, I guess, 2 weeks. 2 weeks. 3 दिन के तो नहीं है. 2 हफ्ते का summer school होता है. अब check कर लो. Yeah, exactly. So no, I do not have scholarship. But chalo. Yeah, वो बस होता है. LUMS का summer school is a bit expensive, but it's sort of a good exposure.
But it's not something that's very sort of a game changer. करना है and you can easily afford it, कर लो. When it's not like कि आप वो करोगे तो आपको कोई Ivy League में admission हो जाएगा. No, make use of your summers for other things. And don't worry, आपका भाई, your sir, he applied to unis across the world. I got full rides. I've been through the counseling process. I have a very strong MUN, what do you call it, experience. MUNs both kiya, and yes, extracurriculars do matter. They do matter. MUNs ka I'm not sure if you're someone who have been doing MUNs, but I'm a part of Lumen too. And uske baghair, I guess for LUMS, my SAT was a bit on the lower end. But LUMS and the scholarships a bit challenging. I did get a lot of scholarships abroad, so that's a different story. But we're going to discuss all this inshallah in a counseling session. आप लोग के CIs हो जाए ना, फिर ये नहीं कि हमारा ग्रुप डेड हो जाएगा. फिर हम इंशाल्लाह ये काउंसलिंग वगैरह इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सब अच्छे से होगा. आप लोग को मैं गाइड करूंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी. MUNs is sort of a debating competition. ECA basically means extracurricular activities, and sports में I do gym, I sometimes play squash, sometimes, very rarely though. And yeah, that's it. But मेरी तो बस हो गई, and I hope this session was helpful. See you guys inshallah whenever the next session was planned. Otherwise the group is there to help you. सही है, आप एक दूसरे की भी help करें, जहाँ पे समझ ना आए मुझे भी tag करना, and I'm going to help you with everything. Add your fellow friends into the group. Take care of everybody. Allah Hafiz.